कम्युनिकेट किया करो ना मेरे साथ. So good afternoon to all the online students. Yesterday we started our class. फिर class start होते ही technical error आ गया, and because of that we were not able to do anything, right? But anyway, let us start today. Our focus today is going to be on three major areas. First, I will be starting with the Mahajanapada period. Second, I'll be taking the Mauryan period, and in the end, I will discuss briefly about Gupta period as well as Ashoka. ये आज का हमारा एक मोटा-मोटा क्या है सिलेबस है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. So when we discuss about Mahajanapada period, it's about 600 BC. ले आओ यार स्टाइलर्स, कितना कैसे काम होगा? It's around 600 BC, right? So 600 BC. First of all, it's about the beginning of state system. Okay? It's about the beginning of state system. What's the meaning of state system? Yesterday we discussed a little bit for the offline student, but online वालों का discuss नहीं कर पाए. State means, first of all, there are four characteristics. First उसमें से क्या होता है? People, like all of us. Take the example of India. India is formed of, number one, people. Second, if you know about our constitution, we have defined our territory, yes or no? So we have defined our territory, right? We may have territorial disputes, like POK is there. We consider as part of our own country, right? That's very important. But we have defined our territory. Number three, which is equally very important, is the formation of a government. Government is very, very important. And once the government is formed, last thing is going to come into the picture, that is sovereignty. So whenever these four things come together, that's when we say the creation of state. The creation of state, right? These are the four things which should always be there, right? These are the four things which should always be there. All right. So what's important? That in the 600 BC, we see the beginning of state system for the first time. Why? Because the government's role increased. They were able to collect tax in a rigid manner, and second, now they were also having a very strong army. Without army, you cannot exercise sovereignty. जैसे अभी आप देखिए, the fight which we had with the Pakistan, could we have defended ourselves without a standing army? No, we would not have been able to defend ourselves. That's why the role of army is very, very important, right? This happened for the first time in 6th century BC. Okay, 6th century BC. This is what is being known as Mahajanapada. The evolution is like Jana, Janapada, and that finally Mahajanapada. Okay, so when we start from the Vedic period, in the Vedic period, the early Vedic period, we only had people, tribes, and that is known as Jana. Then the Janapada phase came, in which it was about people plus territory. Okay, because they were now living a settled life during the later Vedic period. And finally, by the Mahajanapada period, we see the addition of a strong government, plus since the strong government came, it was also able to exercise sovereignty. So whenever somebody asks you what is the meaning of Mahajanapada, these were the 16 states which emerged in India. How many states? 16 states. Okay, 16 states are there, 16 states. These 16 states were now going to control the majority of the part of India. Like this is the map which we always utilize for this purpose, right? So if we see the easternmost Mahajanapada, it was Anga. Immediately towards the west, we had the Magadha, right? The west. If we see towards the western region, here we had Kambos, here we had Gandhara. These were towards the west. If we see in the center, here we had the Matsya, right? And just below this, we have the Avanti. So in general, we had 16, but इन सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. जो सबसे प्राइम है, उनका नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा. One is your Magadha region, and the second is the Avanti. These two are the most strongest one. Now, one more thing which we are required to remember, that when states were formed, states were of two kinds. Majority of these states were led by monarchies.
Okay, they were led by monarchy. What's the meaning of a monarchy? Meaning the power is in the hand of a king. One single king is going to take all the autonomous decisions, right? While the others, they are known as oligarchies. Okay, oligarchies means where a group of people, बहुत सारे clans एक साथ मिलके फिर वो decision making किया करते हैं, ठीक है? और हम इनको बोलते हैं गणा संघास. क्या बोलते हैं? गणा संघास बोलते हैं, ठीक है? कुछ कुछ हिस्टोरियंस इनको रिपब्लिक्स भी बोलते हैं. They use the word republics, but republics उतना accurate word नहीं है. Republics उतना accurate word नहीं है. क्यों? Republic gives a sense that probably everyone is participating. Like republic is a word which is very close to democracy, right? It is very close to democracy. But republic, क्यों? Power किसके हाथ में थी? कुछ families के हाथ में थी. Just be clear. That's why the good word is oligarchies or dynasty. ठीक है? The 16th century, जो 6th century है, this is about the Mahajanapada period. 16th are there. Features की जब हम बात करते थे, यही 4-5 features. सबसे पहले इनके पास क्या आ गई? Territory. They are territorial kingdoms. Number 2, what kind of administration is there? Centralized. Now it is debatable to what level it was centralized. भाई किस लेवल का सेंट्रलाइजेशन था? आज के लेवल का सेंट्रलाइजेशन तो पॉसिबल है नहीं. आज तो पूरी गवर्नमेंट व्हाट्सएप पे काम करती है ना? कि मतलब हर कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट हो आप, आपका एक ग्रुप तो होने वाला है ना? कि इमीडिएट काम कराने के लिए स्ट्रीमलाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन या ईमेल का यूटिलाइजेशन करते हैं. आज के लेवल के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देखें. इफ मोदी जी हैज टू गो फ्रॉम हियर टू साउथ इंडिया तो मुश्किल से 2-3 घंटे लगते हैं, है ना? दिल्ली से अगर बिल्कुल कन्याकुमारी भी जाना हो तो 3 घंटे के अंदर फिनिशर. तो इट्स इजी फॉर द लीडरशिप टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मोबिलिटी बहुत हाई. तो किस लेवल का सेंट्रलाइजेशन है इस पर हम अभी डिबेट नहीं कर रहे, वो बाद में आराम से बात करेंगे कि व्हाट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज देयर. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वाज अ सॉवरेन रूलर. नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन एंड redistribution. Taxation is very important part of sovereignty. If a state wants to survive, it cannot survive without revenue. बिना रेवेन्यू कुछ पॉसिबल ही नहीं है. गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी को आप भी इनसे कल को जाके ब्यूरोक्रेट बनोगे तो ब्यूरोक्रेट की सैलरी कौन देगी? सरकार देगी. सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? थ्रू टैक्सेशन, राइट? सो टैक्सेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. And there was one sector which was very prominent, that was agriculture. Yesterday also we discussed, जब हमने बात की थी Indus Valley civilization. Why do we see the creation of a civilization? Because of agriculture surplus. So surplus was very important, right? Next, very important, maintaining order. और ये करने के लिए हमें law and order functions के लिए हमें क्या चाहिए? Army, right? Because in those days the differentiation between police and army was relatively less. आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्टेट सिस्टम्स हैं. इतने ऑर्गेनाइज तो नहीं थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी देयर वाज अ स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये होता है that they are there all the time and whenever there is any kind of requirement they can respond. Okay, they can respond at any point of time. जैसे आप लोगों ने देखा ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंधु that Indian army was there for us, right? Indian army or the Air Force or Navy, all of them, they were there. This is the concept of standing army, where one person is always ready for this purpose, right? So ये महाजनपदा की क्या है? Features. देखिए महाजनपदा पीरियड जो है 6th century BC is very important in Indian history. The 6th century BC is very important in Indian history. First, because of the creation of state system. ये जो टाइम था ये इसलिए भी important था because we see the rise of many heterodox sects. Heterodox sects means those who were having ideas other than the Vedic period, other than the Vedic text. मतलब जो भी वेदों में लिखा था उनसे अलग उनकी थिंकिंग थी. तो ऐसे लगभग around 60 plus heterodox sects they emerged around 6th century BC. And that's a very important thing for India. Why? Because this is considered as intellectual revolution. This is considered as intellectual revolution. देखिए रिलीजन के अंदर जो भी आइडियाज होते हैं उनको कंसिस्टेंट फिलॉसफी में चेंज करना भी बहुत बड़ी बात है. And here we do see that. Okay, here
We do see that. Like when we see the emergence of these heterodox sects, तो बहुत सारे ऐसे सेक्ट का राइज होता है. इनमें से एक जो फेमस सेक्ट है, that is what is known as Ajivikas. Okay, Ajivikas sect. This believed in one principle, नियति, fate, कि भाई आप और मैं जो है कठपुतली की तरह, जो भी ऑर्डर आता है वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है ना. किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है. Whenever we have some time जो हम बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, तो ये फिलॉसफी हमारी एकदम से चालू हो जाती है कि जो किस्मत में है वही होना है, उससे वो आगे पीछे ना बढ़ा, मिलने वाला ना कुछ होने वाला है. So this philosophy became very prominent at that point of time. और इन्हीं में से जो इनके फाउंडर थे, इनका नाम था नंदवाच. ठीक है, तो नंदवाच ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस फिलॉसफी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अजीविकास. बाद में इसके काफी सारे बाद में और भी टीचर्स आए, जिसमें से जो सबसे फेमस टीचर है उनका नाम है मखाली गोचला. इनफैक्ट ही वाज अ फ्रेंड ऑफ महावीर, एंड ऑल ऑफ यू नो महावीर वाज रिस्पांसिबल फॉर द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म व्हिच डेवलप्ड साइड बाय साइड. तो 6th सेंचुरी बीच में ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे साधु थे who were having consistent level of interaction with themselves. और इस ट्रेडिशन को हम बोलते हैं श्रमान ट्रेडिशन. क्या बोलते हैं? श्रमान ट्रेडिशन, भिक्षु ट्रेडिशन भी बोलते हैं. These people left their homes, their easy lives in order to search for truth. Okay, these people were trying to find truth in their life. और देखिए, truth is always going to have multiple dimensions, and all these heterodox sects, जो कि जिनकी जो विचारधारा थी, जिनके जो फिलॉसफी थी, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेदास. तो ये धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, और इनमें से जो एक हमने अभी जस्ट डिस्कस किया बस अजीविकास. अजीविकास की जैसे आप आइडियाज देखिए, सबसे पहला यही है, इट इज नियति, मीन्स द फेट इज ऑलरेडी रिटन. इसी को हम बोलते हैं फैटलिज्म, FATALISM, फैटलिज्म, राइट. एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, हमारे सब कुछ प्री डिटरमाइंड है. मतलब एक तरीके से कहते हैं कि भाई आप कुछ भी करो लाइफ में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सब कुछ कहाँ से है? ऊपर से है ना. तो अगर हम इस फिलॉसफी में 100% एक्सेप्टेंस कर ले, है ना, फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, राइट. बट इसी के ऊपर ना एक बार चाणक्य ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था. लाइक हम कहते हैं कि भाई जो किस्मत में है वही होगा. चाणक्य ने क्या क्या पता किस्मत में यही लिखा होगा, करने से होगा, है ना. क्या पता किस्मत में यही चीज लिखा होगी, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. सो it's not that simple of a philosophy that we understand that everything is written means every single thing. Probably the outlines of our lives probably is written कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूज नहीं करेंगे अपने रिसोर्सेज, our mental resources, then we will not be successful in our life. Anyway, so this is one of the philosophy. They believe in that there is no life after death. जो भी है सारे हिसाब यहीं पे करके जाना है, ठीक है. जो भी है यहीं पे कहानी खत्म होगी, राइट. And they criticized the Vedic practices. They were against the Vedic practices. That's why we are using the word heterodox. Somebody who is not believing in the Vedas, they are known as heterodox. इसीलिए ऐसे काफी सारे स्कूल यहाँ पे, इनमें से एक जो सबसे फेमस है, लोग कहता है यहाँ पे चारवाक. चारवाक इज द फिलोसफी ऑफ मटेरियलिज्म, कि भाई खाओ पियो ऐश करो, बाकी सब देखा जाएगा. जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना. कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, कितने तुमने पाप किए, कितने पुण्य किए, ये सब की लिस्ट कोई नहीं बनाना, ठीक है. जो भी है वट एवर यू नीड टू डू इन लाइफ, जस्ट डू इट, एंड फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा, राइट. तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म, कि भाई हम नहीं मानते भगवान को, ठीक है, हम ही भगवान है, ठीक है, हम नहीं मानते भगवान वगैरह को. दे आर मोर लाइक वी आर गोइंग टू ओनली एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू जो चीज हमें मिल जाएगी, उसी चीज को हम मानेंगे. They always say, can you see God? आपका आंसर होगा नहीं. क्या कभी उनसे बात की है, उन्होंने आपको कुछ बताया? नहीं. तो फिर माने कैसे? So they always believe in experience, कि आपकी जो सेंसेस हैं, अगर उन सेंसेस से आप किसी चीज को देख पा रहे हो तो ही हम उसको मानेंगे या उसको महसूस कर पा रहे हो. If you are not these 5 senses that we have, if you are not able to do that, then naturally you are not going to accept such a knowledge. ये हमारा जो स्कूल है इसको हम क्या बोलते हैं? चारवाक बोलते हैं. फिर हमारे दो सबसे फेमस स्कूल आते हैं. The first school is that of Jainism. Yesterday we were also discussing about this concept that what's the difference between a sect and a religion, right? Like we are using the word Charvak as a sect,
right? We are using the word of Ajivikas as a sect. तो religion और sect में कि दो इन चार चीजों का difference होता है, ठीक है? मतलब in fact there are three things which are the parameters. Like first one, there should be a holy book, right? There should be a holy book, or in another word, the more precise word is canon. There should be a canon. Like if you see Jainism, if you see Buddhism, or even if you see Hinduism, everywhere you'll find a holy book. Holy book is going to be there. Second, very important, these religions are going to have a priestly class because the founder is gone who gave the initial ideas. But it should be carried forward. The legacy can only be carried forward by the priestly class. And in the end, it's always going to be about followers. So if these three things are there at the same time, then we call it a religion. If any of one thing is missing, it may become a sect. Okay? So that's why we are using the word religion with Jainism and Buddhism. The other mostly remain as a sect, right? Because those things could not get organized to that level. Now, in Jainism, all of you know, there's the concept of Tirthankar. Tirthankar means these are the teachers that we have. Overall, we had how many Tirthankar? 24. And Mahavir, he was the last Tirthankar. The ideas of Jainism that we have, okay, the ideas of Jainism, they are broadly divided into multiple phases, right? Like there are 2-3 philosophies which are very famous, like Sayyadvad, means limited knowledge that we have. Anekantvad, another very important one, in which you say that there is no absolute truth. There could be multiple interpretation. एक बहुत अच्छी story है ना? Like 5 blind people, they were told कि भाई you touch the elephant, right? They were touching the different parts of elephant. हर किसी के लिए जो philosophy, जो उनके idea थे, जो imagination थी, वो elephant की अलग बन गई. That is like Anekantvad. You cannot have the same kind of imagination for everything. So that's why in Jainism, what we understand is that there are certain very important ideologies like the Sayyadvad and that of the Anekantvad. Along with this, there are few things which they believe in absolutely. Number one is non-violence. No religion pays so much respect to the principle of non-violence as Jainism. Jainism में आप ये भी जान लीजिए that those people who follow Jainism, they do not engage in agriculture. Because when you engage in agricultural activity, naturally you have to kill insects one way or the other. हाथ तो डालोगे ही ना, ठीक है ना? You use the pesticide and naturally there will be death of probably millions of such small species of any kind. So that's why non-violence is given so much of importance in this religion. Second, salvation is always going to come through self-discipline. So what they believe in is that you have to always go for penance. अरे पेनेंस तो करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, इसी के थ्रू आपको एनलाइटनमेंट मिलने वाली है. नंबर 3, the world has no beginning or end. This is very important in general. Like if you see the other religions, they often say that the world was created by the God, but in Jainism they do not say that. They say the world has no beginning or no end. और वर्ल्ड किसने बनाया है? It is because of an eternal law or universal law. Such kind of questions come in the prelims. ये तो in fact एक previous question ही है आपका prelims का कि as per the philosophy of Jainism, जो world है वो किसने बनाया? The world was created by, then they gave 4 choices and one of them was the eternal law. तो ऐसी कुछ जो basic ideas हैं आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? Then there is one more very important thing in Jainism. They say that there is soul in everything. There is soul in everything. Does not matter if it is a human, does not matter if it's a chair. As basic as that. फर्क ही नहीं पड़ता. There is soul in everything. That's something which is a basic idea of Jainism. Now in Jainism there is one concept which is very paramount, and that is the concept of karma. So here the karma is not just about action. They say karma is a kind of a particle which attaches to your body as well as soul, and until and unless you defeat all this karma, you are not going to get enlightened. आपने एक सुना होगा that there is a word known as samsara or salekna. Just before death, there is a fast unto death in Jainism. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई थी. कुछ लोगों ने जाके केस फाइल कर दिया था कि भाई दिस इज लाइक सुसाइड, बट
सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में बोला भाई इट इज नॉट सुसाइड बिकॉज ये विलफुली कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटी। तो ये लास्ट में किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाई इट इज डन टू गेट रिड ऑफ कर्मा, to get rid of karma. These are some of the ideas which are belonging to Jainism. In history of the syllabus, UPSC यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछती रहती है, कुछ कुछ सालों में एक आधा क्वेश्चन जैनिज्म से आता है। तीन इसके मेजर रत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, और 5 वाउस लिए जाते हैं, 5 इंपॉर्टेंट वाउस रहते हैं इस रिलीजन के अंदर। लाइक नंबर 1 नॉट टू किल एनीवन, जो कि हमने सबसे पहले बात किया, नॉन वायलेंस। नंबर 2 नॉट टू स्टील, कि भाई चोरी नहीं करोगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 नॉट टू लाई, कि भाई हमेशा ट्रुथ बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचार्य, दिस प्रोविजन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू बिकम मॉन्क और नन, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फाइनली नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, ठीक है, कि भाई हम प्रॉपर्टी नहीं, बिकॉज द मोमेंट यू बिकम एडिक्टेड टू लग्जरी, नेचुरली जितना भी आपका सेलिब्रेशन का इसको एक होता है ना प्रोसेस होता है, वो हिंडर होने लग जाता है, बिकॉज नाउ यू आर मोर एडिक्टेड टू दिस। So these were some of the vows which were part of the Jainism, right? Which were very very important. After this, the next is Buddhism. ये बस ध्यान रखना, Jainism is older than Buddhism, right? And when it comes to Buddhism, Buddhism derives its basic philosophy from Upanishad. Okay? Buddhism derived its basic philosophy from Upanishad. The story of Buddha is also very striking, right? And he was a person who was, when he was born, there was a prophecy that he will either become a very great king or he will become a very big saint. ना बीच का रास्ता ही नहीं चुनेंगे, या तो ये या फिर ये, बीच का कोई काम नहीं करने वाले, because he was naturally born in a royal household. So when Buddha was born, his father considered it as a project कि भाई इनको तो सबसे बड़ा किंग ही बनाना। So for the initial 20-25 years, he was kept in seclusion from the other problems which were there in the life, right? कि भाई basic जो health problems होती हैं, किसी की death होती है, etc. etc. He was kept away from that. But by the age of 29, he became aware about all these things, and then comes the pathway where he renunciated, and eventually he also became part of the tradition जिसको क्या बोलते हैं, Shraman tradition. So at the age of 29, he went for the process of finding truth in life, right? And this is how we see the beginning of the ideas of Buddhism. Buddhism के अंदर देखिए बहुत सारी important चीजें हैं, ठीक है। The most important thing that is, in fact उनकी teachings भी निकल के आती हैं लास्ट में। These teaching is that there are 4 noble truths. After getting enlightenment under the Bodhi tree, 4 noble truths were given by. Number 1, he said there is suffering and sorrow in this world. There is suffering in this world. और क्यों आती है suffering? What's the major reason for this suffering? Very important. It's the most important thing is desire. We as humans, we desire n number of things. और ये desire की वजह से बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आती है, right? Third, he says that this pain, sorrow can be reduced. कैसे? By giving up the desire, or by suppressing the desire. But for doing so, you have to follow one path, and that path is known as the noble eightfold path, जिसको अष्टांग मार्ग भी बोलते हैं। Eightfold path जो आपको pursue करना है। So this is what he was able to come up with. So Buddhism became a prominent kind of a religion with the period of time. बहुत सारे kings ने आके इसको support किया, starting all the way from the initial kings of the Haryanka dynasty, जो मगध के, and with the period of time, it eventually became one of the largest religion in India. And during the Mauryan Empire, all of you know, Ashoka converted from Shaivism to Buddhism. उन्होंने conversion किया और बाद में उन्होंने पूरी की पूरी इनकी ideology को आगे support किया. And there's one very important concept, that is the concept of nirvana. The concept of nirvana is very very important here. It means where you are able to get rid of desires and you reach a state of highest bliss. Life में आपके बिल्कुल क्या आती है, highest bliss आती है, clarity निकल के आती है, right? Eightfold path की जब हम बात करें तो again they focus right views, resolve, speech, conduct, livelihood, effort, recollection, and even meditation. Meditation is very very important in Buddhism because they feel that if you do not do meditation, it's very difficult to stay on your path.
है ना। इसलिए कोई भी किसी को बोला था कि भाई योर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करो, मेडिटेशन, है ना। हैव सम ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ, सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ पार्ट इन दिस. There are few things about Buddhism, like one of them, Buddha was asked this question, is there a God? कि भगवान है कि नहीं. सबसे पहले तो हम जैसे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, कोई भी बाबा सामने आके बैठते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, भगवान है कि नहीं है. तो बुद्धा के सामने भी ऐसे लोग आके बैठ गए हमारे जैसे. तो ही सेड ही नीदर एक्सेप्टेड नो डिनाइड. ही सेड अपने लिए खुद जान जाओ, मैंने रास्ता बता दिया, रास्ता फॉलो करो, ठीक है ना. यू विल गेट टू नो इट बाय फॉर योरसेल्फ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट नीदर डिनाइड. प्रीलिम्स में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऑप्शनल में भी जब आप मान लीजिए बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद दीज वर्ड्स. बिकॉज अगर आप एकदम से लिख दे हाँ रिजेक्ट कर लिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया, दैट विल बी डिफिकल्ट, राइट. दैट विल मेक इट लाइक द लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो मेंस में इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से कैच करना चाहिए, ठीक है. ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी. वैदिक रिलीजन के अंदर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज ये थी that with the period of time women were sidelined from religion. The religious aspirations of women, they were not entertained. So in a way women could not become, or they cannot get enlightened. But the pathway for women was opened by both Jainism as well as Buddhism. Okay, so that's why Jainism and Buddhism, they are often also considered as religion which initiated the social reforms. Which initiated the social reforms. इसीलिए it became very prominent for the men. Okay, that whatever their religious aspiration is, that can also now be fulfilled. So Buddhism इसलिए बहुत एक मतलब famous तरीके से बढ़ा आगे, right? Then when these religions, Jainism, Buddhism, they were emerging with their ideas, their relationship with the state also became very interesting and very important. If the state was not going to support them, it would have been very difficult for them to get any path. But क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेट ने भी क्या किया, सपोर्ट करना स्टार्ट. And why did it happen? Why it happened that the state started supporting these two religions specifically? ऐसा क्या हुआ, क्या रीजंस थे उसके लिए? तो इसके तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस क्यों उन लोगों ने इसको सपोर्ट किया. सबसे पहला चीज ये है कि जो मैक्सिमम सपोर्ट आया इन रिलीजन्स के लिए, it came towards the eastern region of India. It came towards the eastern region of India. Why towards the eastern region? That also has a specific reason. Because the Vedic Aryans, they were largely located in the western part. Okay, the Vedic Aryans, they were largely in this part, and their religious ideas were also here. That's why all of you know the epicenter of Mahabharata is also in the region of Hastinapur, right? That's the epicenter that we have. So this region was having a vacuum. This region was having a vacuum. So naturally, if these states wanted to become strong, they needed religion. I told you yesterday that religion and state, they have very strong bonding. Okay? इलेक्शन से जस्ट पहले हमेशा एकदम से बाबा सारे पॉपुलर हो जाते हैं, है ना. इलेक्शन से पहले मतलब कभी भी आप देखना, इलेक्शन से जस्ट पहले all the babas who are in that state election हो चाहे आपका लोकसभा इलेक्शन हो, all the babas they become active because there is a very prominent relationship between state and religion. State needs support, religion required patronage. Patronage is given by the state. हमेशा ध्यान रखना है इसको, ठीक है. पैट्रोनेज मीन्स इन अ वे कि भाई मनी वाइज सपोर्ट चाहिए हर छोटी छोटी चीज के लिए. एंड रिलीजन हैज फॉलोअर्स. द मोमेंट patronage came, the followers are going to support state. So in the eastern part of India, one reason was since there was a vacuum, so naturally they were going to support one religion. So these religions became perfect for that. Second, these religions
also gave impetus to trade. They said that you should participate in the trade. Vedic period में there was a restriction on money lending. They used to say कि अगर आप किसी को उधार दोगे और उससे इंटरेस्ट लोगे तो काला धन होगा, तो क्या होगा? काला धन होगा. But can businesses grow without money lending? They cannot grow. So naturally यहाँ पे जो ट्रेडिंग क्लास सारी की सारी ने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बिकॉज उन्होंने उसको अलाउ कर दिया. इनफैक्ट बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खुद में एक बैंक की तरह फंक्शन करने लगे. द फंक्शन ऑफ बैंक इज डिपॉजिट एंड देन दे गिव द क्रेडिट. ये सारा काम बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज ने शुरू कर दिया. जो उनके पास पैसा आता था पैट्रोनेज से उसको वो आगे मार्केट में डाल देते, so that in the future it can give them return in the future. So second was very important. All the trading classes who were not happy with the practices of the Vedic religion, they also started supporting Jainism and Buddhism. Third, as we've just discussed, they were also able to cater to women. So women also started supporting Jainism and Buddhism. इसीलिए इनका rise ज़्यादा होता है from this time onwards. And that's the major reason why starting from 6th century BC even till today both of these religions are so strong, right? Jainism, even though they do not have a very large population, but they have a specific population and they are continuing the tradition from a very long time. With respect to Buddhism, Buddhism slowly became relatively defunct in India because some of its idea became part of Hinduism. जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म में अवतार का कंसेप्ट, बुद्धा वाज लेटर ऑन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु. इसकी वजह से सारे आइडियाज बुद्धिज्म किसका पार्ट बन गए? हिंदुइज्म का पार्ट बन गए. लेकिन बुद्धिज्म स्प्रेड टू चाइना, बुद्धिज्म स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट? तो साउथ ईस्ट एशिया, इवन सम पार्ट ऑफ जापान आल्सो, तो हर जगह बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हो गया विद द पीरियड ऑफ टाइम. So Buddhism today, it is a major religion, not in India, but in the rest of the part of the world. Because of these ideas, right? ये हम सबने अच्छे से एक बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है? Now let us discuss specifically about one Mahajanapada, and that is Magadha. Okay? Now Magadha, it had many dynasties. Like the first dynasty, the popular dynasty was that of Haryana, right? So Haryana dynasty had two famous rulers. First was Bimbisara, and the second was Ajatashatru. Right? All of you probably know the story also. Ajatashatru killed his own father later on. Alright. But anyway, let us try to understand. Haryana dynasty played a very important role in establishing a strong footing for this Magadha region. जैसे कि अगर हम बात करें बिंबिसार की, ठीक है? तो बिंबिसार की बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज थी एक्सपेंसिव की. उनके कुछ स्पेसिफिक तरीके थे जैसे वो एक्सपेंड करते. लाइक नंबर वन, एक था मैरिज अलायंसेस. आज की डेट में तो मैरिज वाला तरीका नहीं होता एक्सपेंशन करने के लिए, है ना, कि अमेरिका और इंडिया के बीच में मैरिज की कुछ हो जाए, राइट? दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर, बट पहले के राजाओं के बीच में दिस यूज्ड टू बी देयर, राइट? लाइक ही मैरिड द सिस्टर ऑफ कोशस किंग, दैट इज प्रसन्नजीत, एंड क्या मिला उनको? काशी. गौरी में काशी मिल गया, ठीक है? द स्पिरिचुअल एरिया काशी मिल गया उनको साथ में. सेकंड, he married princess from Lichavis as well as Madra. Now Madra was a clan in Punjab. Punjab तक भी पहुंच गए उनके अच्छे रिलेशनशिप. Then he also maintained relationship with the Manti. So marriage alliances were utilized by Bimbisara. He also annexed the region of Anga. Anga जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ, जस्ट मगध के जो राइट साइड में महाजनपद का नाम क्या है? अंगा. तो इन्होंने काफी स्टेप्स लिए टू मेक मगधा अ वेरी पावरफुल किंगडम. बड़ी आर्मी बनाई. मगधा के अंदर दो तीन और अच्छी एडवांटेजेस थी. दिस मगध रीजन, दिस वाज हैविंग वाटर रिसोर्सेस, दिस वाज आल्सो हैविंग फॉरेस्ट रिसोर्सेस, and any state which wants to rise, any empire which wants to be built, they require resources. In fact, उस टाइम के जो famous trade routes थे, they also go through the region of Magadha. और ट्रेड रूट्स होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू कैन कलेक्ट टैक्सेस. आपके रिसोर्स बेस वो भी बढ़ा देता है. सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे वर एबल टू कलेक्ट टैक्सेस. तो इन सारी रीजंस की वजह से मगध बिकेम अ वेरी पावरफुल स्टेट, एंड लेटर ऑन इट्स गोइंग टू
transform itself into the empire which we all know as the empire of the Mauryas. Okay. Yes. Don't know. No, it used to be like in general there used to be embassy from one part to the another. See, इंडिया में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हर किसी के साथ है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में जैसे ही था कि भाई किसी के साथ फाइट भी होगी तो एंड में रेजोल्यूशन निकालने के लिए शादी कर देते थे. लाइक चंद्रगुप्त मौर्य ही इवेंचुअली लेट बाद में उनके और सेल्यूकस निकेटर, राइट, उनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन बन गए, राइट, आफ्टर डिफीट. बट अगर नहीं भी हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन यू कैन हैव अ, राइट. सो मैरिज एक तरीका था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दोज डेज. तो शादी सिर्फ एक पवित्र रिश्ते की तरह नहीं था. शादी was just one more method which was utilized for the sake of strengthening of the state which was there, right. Ajatashatru, the way in which he came to power, it was very problematic. It was like very इसको बोलते हैं patricide, right, killing your own father. So he murdered his own father to come to power. Later on he also established his own empire, like military confrontation between Magadha and Kushan. It started, right, and later on he also fought and won against the Lichavi. दोनों को defeat किया. Lichavi रहता था माला महाजनपदा को भी इन्होंने defeat किया. He also met Buddha. Okay. After the Haryanka dynasty, the next dynasty which came to power, its name is Shishunag. Shishunag dynasty came to power, right? After that, after this dynasty, we see the rise of Nandas. और उनमें एक जो सबसे फेमस रूलर है उनका नाम क्या है? महापद्मनंदा. तो महापद्मनंदा is often considered was the first person who created empire. जितना ऐसे किंगडम और एम्पायर में कोई यार देखो फैक्चुअल डिफरेंस नहीं होता कि भाई कितने स्क्वायर किलोमीटर का होना चाहिए तो हम किंगडम बोलेंगे, उससे बड़ा होगा तो एम्पायर. बट इन जनरल महापद्मनंदा is given this credit for creating first empire in, and he was a person who was a very strong personality, was having a large army, right? And with the period of time after the Nandas, like the last ruler of the Nanda was Dhanananda. And Dhanananda, he was toppled by Chandragupta Maurya. And this is where we see the beginning of the Mauryan dynasty. The Mauryas are very famous for our history, right? They are very famous for our history because for the first time we see pan-India empire. Pan-India empire means लगभग पूरा इंडिया उनके अंडर आ गया. तो महापद्मनंदा जो है उनको हम बोलते हैं the first empire creator in India. And Chandragupta Maurya is considered to be the one who was able to create a pan-India empire. And this tradition was continued by his son Bindusara, and later on the third personality, the most important one, that is Ashoka. Okay, Ashoka is very famous not just because of his military conquest, because in his whole career he fought only one major war, that was the war of Kalinga. उसके बाद उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है ना, कि भैया देखा नहीं जा रहा है मुझसे, and he eventually shifts towards the policy of Dhamma, cultural conquest, कि भाई लोगों से बातचीत करके उनको अच्छी सद्बुद्धि के साथ conquer करना चाहिए rather than just fighting with the sword. So that eventually is going to happen in the future. Okay, so एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. 6th century BC, जहां हमने देखा the beginning of the 16 Mahajanapada. Okay, we see the first invasion also in India during this part. And this is the invasion by the Persia. ठीक है, तो पर्शिया का इन्वेजन होता है इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. देन ड्यूरिंग द 4th century BC we see the invasion of Alexander. ठीक है, एग्जैक्ट जो डेट है इट इज अराउंड 326 BC. इसकी भी अपनी एक अच्छी स्टोरी है. Alexander, he came first, he destroyed the Persian empire and then he came towards India. He came to the borders of India, right? And then he fought with the famous Porus. Porus को उन्होंने defeat किया, but Porus was a person with immense courage और उसको उन्होंने वापस क्या किया, reinstate कर दिया. But Alexander के बारे में ज़्यादा Indian sources में mention नहीं है. Reason being, it was a border invasion. It was a border invasion. अगर इनको बड़ा नाम बनाना था, then he was required to defeat the dynasty which was in power at that point of time was Nanda. Nanda was the ruler at that point of time. So he was required to fight with them. But since he was just towards the border of the Indian subcontinent, so as such कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इनका इंडिया की हिस्ट्री.
लेकिन क्या हुआ जब शुरुआत में ब्रिटिश लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू किया, तो दे इंक्रीज द रोल ऑफ अलेक्जेंडर जस्ट टू इंक्रीज देयर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यूरोपियंस पहले भी आए थे और तुम लोगों ने बात नहीं मानी, है ना, इसलिए हम वापस आए, है ना, वी हैव कम हियर टू फिनिश द जॉब व्हिच वाज लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर। तो वो तो छोड़ के चले गए लेकिन हम आए हैं वापस पूरा, है ना, बहुत सालों पहले हमने ये एक आपका संकल्प लिया, आज आ गए। So Alexander was given too much of weightage by the British. Reason being they wanted to justify the connection with the Europe. ठीक है, बट एज सच कोई बहुत बड़ा इनका आउटकम नहीं। इनफैक्ट इनकी आर्मी ने खुद रिवोल्ट कर दिया एंड ही हैड टू गो बैक। बहुत लंबे टाइम से दे वर फाइटिंग एंड दैट दे वर, बोलते थे कि एक घर की याद आ गई थी, वॉर वेरी पीपल, कि हमें घर जाना है, हमें और कुछ नहीं करना, लड़ाई वड़ाई खत्म करो वापस। दीज आर द टू इन्वेजन्स दैट वी हैव। ठीक है, जो पर्शियन की तरफ से हम लोगों को अटैक करते हैं उनका नाम है साइरस। So he invaded around 530 BC and he even destroyed the city of Capisia in the region of Taxila. ठीक है, and then the Greek historian Herodotus, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, Herodotus. He is known as the father of history. He has written this text known as Historica. ठीक है ना, तो हिस्टोरिका में इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है that the northwest part of Indian subcontinent became the 20th province of the Persian Empire. और इंडिया के अंदर से जितना सोना आता था, the count of tax they used to get, it was more than the rest of the 19 provinces of Persia. तो इंडिया के अंदर देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, we were wealthy. Yes, we were wealthy because this was the Indus plain जिस तरफ को उन्होंने कैप्चर किया था, which is today is the part of Pakistan. तो वो पूरा का पूरा एरिया किसके अंडर चला गया? It was under the control of the Persian. और कौन सा प्रोविंस बन गया? 20th. ठीक है, it was 20th and the richest. प्रोविंस को वो क्या बोलते थे? स्ट्रैपी बोलते थे, ठीक है, सेक्टर भी बोलते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट इन्वेजन, जिसको हम पर्शियन इन्वेजन बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, he fought with some of the small rulers at that point of time. We do not see much of his mentioning in Indian sources, right? First, the ruler of Takshila by the name of Ambi, मुझे लड़ाई करने से मना कर दिया कि भाई मैं पहले हार मान लेता हूँ, ठीक है ना, पहले हार मान लेता हूँ। But then came the battle of Adapsis, right? And this was fought with Porus. Porus, even though he was having a very small army, but still he chose to fight with Alexander. After defeating his army, Alexander reinstated him and showed that this person was having courage, right? And later on, his army refused. उनकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई अब हम नहीं जाएंगे आगे। And Indian historians इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, probably Nandas were having a very large army and Alexander was now, Alexander अब डर गया था। So now these are interpretation. Nobody knows the real reason. The maximum reason that we accept is that his army refused to march towards the east, probably due to fatigue, because they had started from the Europe, पूरा वेस्ट एशिया कवर करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो नेचुरली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबॉडी विल से भाड़ में जाओ, है ना, हम घर वापस जा रहे हैं, बाद में देखना अपनी जर्नी। And he could not make the fourth journey. Actually, he died in between itself. He had fever in Babylon region, and then he eventually died. Right? So these are the two invasions that we have in Indian history. तो कभी भी आपसे पूछे कोई कि इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में इन्वेजन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, so we start from the Persian. The Persian was the first invasion. The second invasion it was from the Alexander, और इसको बोलते हैं Macedonian invasion. That's the second invasion that we have. आर्यन इन्वेजन एक्सेप्टेबल नहीं, कभी कभार कोई वर्ड यूज कर लेता आर्यन इन्वेजन, बट हमने उसको पहले भी बात किया था, आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया, इट वाज नॉट अ इन्वेजन, इट वाज अ माइग्रेशन. There's a difference between migration and invasion, right? There's a difference between that. Now, once Chandragupta Maurya, he was able to defeat Nanda, then they created one of the largest empire in India. This empire was in the north, this empire was here also, okay, up to the region of Karnataka and Andhra Pradesh, and it was able to cover the whole west and towards the east also. Some areas, it was the forest areas, probably they were not under the direct control of the Mauryas. That's why you see there's few vacuum which are there on the map. So this is probably the territorial extent that we have of the Mauryan Empire, right? One thing which is very significant about the Mauryas is the use of inscriptions. This use of inscription was done by whom? By Ashoka. And what was the purpose? The purpose was to send the message of Dhamma.
तो हमें बहुत तरीके के इनके यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। देयर आर सम मेजर इंस्क्रिप्शन, माइनर इंस्क्रिप्शन, है ना, मेजर रॉक, मेजर और माइनर रॉक मिलता है, मेजर पिलर एंड माइनर पिलर, एंड कुछ इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है फ्रॉम द केव ऑल्सो, जैसे कि हमें बाराबार एंड नागार्जुन हिल से भी इनकी इंस्क्रिप्शन मिलती है। तो 5 तरीके की इंस्क्रिप्शन है, मेजर रॉक, माइनर रॉक, मेजर पिलर, माइनर पिलर एंड लास्ट वन इज द केव इंस्क्रिप्शन। 5 तरीके की मिलती है इंस्क्रिप्शन। अब इन्होंने भी क्या किया, जब इंस्क्रिप्शन लगाना शुरू किया तो अपना रियल नेम यूज नहीं किया, he used the word devanam piyadasi, the beloved of the god. So for a very long time nobody was able to see कि भाई ये है कौन सा king, वो which king is this one. In fact nobody was aware about the name of Ashok as such, right? In 1837 James Princeton, now he was an officer of East India Company, he was the one who was able to say devanam piyadasi is Ashok, बिकॉज इनके कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ था, जिसमें से एक जो सबसे फेमस जगह है वो कौन सी है, मस्की। तो मस्की में इनका नाम लिखा हुआ है, गुज्जरा में भी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है वहां भी इनका नाम है। एक दो जगह और है, जैसे कंगनाहली एक जगह विच इज इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, वहां इनका नाम लिखा होता है राणा अशोक। पहले हिस्टोरियंस ने इसको अलग ही इंटरप्रेट कर दिया। द वर्ड देवनम पियादासी वाज ऑफन कंसिडर्ड विद अ श्रीलंकन किंग, एक श्रीलंकन किंग भी इस नाम को यूज करते थे, देवनम पियादासी। तो हिस्टोरियन ने एक स्टोरी बना दी कि श्रीलंका से किंग आए थे, उन्होंने आके इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। बाद में जब जेम्स पेंसअप ने बताया नहीं भाई जो ये कहानी है ये अलग ही जा रही है, ठीक है, दिस दिस स्टोरी इज नॉट करेक्ट। बाद में अशोक का जब नाम डिसाइफर हुआ तब ये सारी चीजें हमें पता, राइट। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु वाज स्पीकिंग टू हिज सिटीजंस और हिज सब्जेक्ट्स विद द यूज ऑफ हिज ओन मैसेज, कि भाई जनता को सीधा सीधा मेरा मैसेज मिलना चाहिए। व्हाट वाज द प्रोसेस टू डू दैट, टू क्रिएट दीस काइंड्स ऑफ मेजर रॉक, माइनर रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शंस, राइट। जब हम अभी हम सोर्सेज के बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। Every year there is one question in our paper from the Mauryan Empire. Every year, it's a fix. When somebody asks me सर सिलेबस बहुत बड़ा है, तो भाई हम उन एरियाज पे अगर फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन आता है सिलेबस छोटा हो जाएगा। जिसमें से एक एरिया कौन सा है, मौर्य। एक एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइक वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मौर्य। If you do these 4 topics correctly, telling you correctly, सही तरीके से कर लेते, आपके 50 नंबर का पार्ट खत्म एशियन इंडिया का। 50 मार्क्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस ओनली। एक क्वेश्चन आपका मैप का आना है, दैट इज गोइंग टू बी अ 50 मार्कर डायरेक्टली। So in optional, the kind of questions which come, it's not about covering the whole syllabus. We will cover the whole syllabus in the foundation, but at the same time, I will help you in developing an expertise in those areas from where questions are going to come regularly. देखिए किसी भी टीचर का जो सबसे बड़ा काम है यूपीएससी में वो यही है, आपको ये समझाना कि अगर इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन शुड गेट सॉल्व, यू शुड बी एबल टू राइट आंसर्स इन द एग्जाम हॉल। नहीं तो हाँ सर ने पढ़ाया था मौर्य, क्वेश्चन भी है लेकिन क्या है पता नहीं, अब क्या लिखूं इसमें बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी। तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल, दैट यू हैव नॉट बीन टॉट द रियल कंटेंट। तो जब हम एक बार पीवाईक्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। बट एनीवे, मौर्यास के सोर्सेज की अगर हम बात करें, देयर आर फ्यू सोर्सेज, लाइक अर्थशास्त्र इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, बट now it is getting discarded by some of the historians, right। जब हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करते हैं तो एक अकाउंट किसका आता है, मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज की जो बुक है इट्स नेम इज इंडिका, ठीक है, इट्स नेम इज इंडिका। और जो इंडिका बुक है ये आज की डेट में प्रिजर्व नहीं हो पाई, ठीक है। सम ऑफ द मेंशनिंग ऑफ दिस बुक इंडिका कैन बी फाउंड इन द अदर राइटर्स। उन्होंने अपनी रिमार्क दी हुई, जैसे एक राइटर है बाय द नेम ऑफ आर्यन, ठीक है, स्ट्रैबो, प्लिनी, इन सब लोगों ने इनके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। So from there we gather the information which was part of Indica. Indica से हमें पता चलता है। Third, we have inscriptions.
inscriptions of Ashok. तो largely हम इनके ऊपर depend, largely we depend upon them to understand about the modern empire. इनके अलावा भी कुछ sources हैं. देखिए sources हमने उस दिन divide किए थे literary and archaeological. एक और distinction होती है जो आप सब लोगों को समझनी है, primary and secondary. Primary and secondary. Primary means where the source, where the person who was writing was contemporary, उसी टाइम पे वो जी रहा. जैसे कि Megasthenes came to the court of Chandragupta Maurya, then he gave a profile of Patliputra. इसका मतलब क्या है, जो इंडिका एज अ सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स हुआ, सेकेंडरी सोर्स हुआ, प्राइमरी सोर्स हुआ. लेकिन इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन बाद में लिखी जाती है, ठीक है, दैट बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स. जैसे कि हर्षवर्धना के टाइम पे एक बुक लिखी गई थी, राइट, हर्षचरिता. अब उसके अंदर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है, मौर्यास के बारे में दी हुई है बाय बानहर. वो कैसा सोर्स बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि तो बहुत बाद में लिखा गया. तो ये बस याद रखना है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. एग्जैक्टली हर्षवर्धना के लिए प्राइमरी हुआ, लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, मौर्यास के लिए. मौर्यास की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स बनना है. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, कि एक सोर्स एक साथ प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है. कुछ इंफॉर्मेशन के लिए प्राइमरी, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी, राइट. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. बाद में इसको और अच्छे से समझेंगे कभी. बट दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज दैट वी डिपेंड अपॉन टू अंडरस्टैंड अबाउट द मौर्यन एम्पायर. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, then probably they were having this advisor by the name of चाणक्य, right. अब ठीक से पता नहीं चलता है चाणक्य क्या है. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कौटिल्य जो था उनका गोत्र था, कौटिल्य उनका गोत्र था और चाणक्य उनका नाम. Now we do not know exactly what's the truth and what is not the truth, but he came out with the strategy to overthrow the Nanda. ऐसे ये एम्पायर बिल्ड किया जाता है, ठीक है. ये जो एक स्टोरी है ना, इसमें भी लिखी हुई है, मुद्र राक्षसा, ठीक है ना. तो ये जो मुद्र राक्षसा प्ले है, इसके अंदर भी है. राक्षसा एक्चुअली एक मिनिस्टर थे नंदास के. तो चाणक्य ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि इस राक्षस, नाम ही राक्षस है ना, राक्षस जो थे वो मिनिस्टर थे. कौन सी गवर्नमेंट में, नंदास में, कि भाई इनको अपनी साइड लेके आएंगे ताकि वो किसकी डायनेस्टी को नीचे गिरा सके, नंदास को. और एक तो वैसे पुरानी कहानी है कि नंदास ने उनका बहुत अपमान किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस अ स्टोरी. और चाणक्य ने कहा था मैं ढूंढ के लाऊंगा अगले इंसान को जो है एम्पायर बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट दोज आर स्टोरी, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मच ट्रुथ इज देयर, बिकॉज व्हेन वी रीड अर्थशास्त्र देयर इज नो सच स्टोरी. दीज थिंग्स दे कम फ्रॉम ट्रेडिशन. इसलिए जब हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ते हैं तो ट्रेडिशन को अलग करना पड़ता है और हिस्ट्री को अलग करना पड़ता है. दूध का दूध और पानी का पानी वाली सिचुएशन हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, विल से फ्यू थिंग्स व्हिच विल नॉट बी ट्रू. एंड हिस्ट्री इज प्योरली अबाउट ट्रुथ, सच्चाई बताने वाली एक सब्जेक्ट. इसके बिना काम चलेगा नहीं, राइट. आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य वी हैड बिंदुसार, एंड आफ्टर बिंदुसार वी हैड अशोक. बिंदुसार ही ruled for around 25 years. Ashok was not the person who was required to come to power. देखिए एक लॉ होता था, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, ठीक है. इट मीन्स दैट एल्डेस्ट सन शुड बिकम द किंग, ठीक है. eldest son should become the king. Ashoka had I don't know how many brothers, है ना, as per the sources, है ना. He killed 99 brothers, है ना. एक सेंचुरी नर्वस 90s में रह गए, एक को छोड़ दिया किसी को. So 99 brothers they were killed for becoming king. So in general there used to be a following of law of primogeniture, but this was not followed by Ashoka. And Ashoka was a great warrior, which can be seen that he fought these wars for 4 years. He came to power around 268 BC. Okay, even though his father, whose reign ends in 272 BC. So broadly 4 साल के लिए उन्होंने क्या करी है, लड़ाई लड़ी. And finally the stability came in 268 BC, जब उनका राज तिलक किया गया. And once Ashoka came to power, he pursued aggressive policy, and the first area which was going to face the wrath was Kalinga. Now Kalinga is going to change his mind. Why? Because 1.5 lakh people they became prisoners. Many more died during the process. So he realized that my
पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा शुड बी चेंज्ड। और उसके बाद कौन सी पॉलिसी आती है? धम्मा घोषा। ठीक है, धम्मा घोषा मीन्स कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, इज नोन एज कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, और जो दूसरी पुरानी पॉलिसी थी उसको बोलते हैं भेरी घोषा। यस, ये सभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, व्हाट वाज धम्मा? धम्मा मीन्स अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना सिविल सर्वेंट के लिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। धम्मा उसी तरीके से था। इट वॉज देन री इंटरप्रेटेड, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई थी, लाइक नंबर 1, यू शुड ट्रीट एवरीवन काइंडली, चाहे वो स्लेव ही क्यों ना हो, दैट्स नंबर 1। सेकंड, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स, लाइक योर फादर्स, योर मदर और एवरीवन अराउंड यू, इवन योर टीचर्स। नंबर 3, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? धम्मा बोलते हैं। लाइक ही सेड दे शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, fourth he says that you should not compete with each other for your what spreading of your religion। ऐसा करोगे तो आपको दोनों का रिलीजन खराब हो जाएगा, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू serve your the purpose of your religion if you're fighting with each other on just some basic things। So like this he created a list and that is what came to known as Dhamma। The Dhamma word it's very prominent and इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? धर्म। प्राकृत में धम्मा बोलते हैं, संस्कृत में क्या बन जाता है? धर्म। धर्म मीन्स ड्यूटी। इन अ वे द वर्ड धम्मा मीन्स ड्यूटी। व्हिच आर योर ड्यूटीज टू लिव इन दिस लाइफ, टू लिव योर लाइफ लाइक अ पर्सन हु इज एबल टू फॉलो सर्टेन ड्यूटीज। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से अगर आप धम्मा फॉलो करोगे तो इस जिंदगी में भी खुश रहोगे, अगली जिंदगी में भी खुश रहोगे। ठीक है, इवन दो ही टुक सम ऑफ द आइडियाज फ्रॉम बुद्धिज्म, like following the ideas of non-violence, okay, respect for everyone. These were the ideas which were there in Buddhism itself. So he was influenced by the ideas of Buddhism. In fact, after the Kalinga War, he turned from Shaivism. He was a follower of Shiva. From Shiva, he later on became a follower of. The same will going to happen to Harshvardhana also. Harshvardhana initially was a follower of Shiva. Later on, he became a follower of Buddhism. So, like this, things are going to change. Things are going to change for him. So he came to power, right? Famous, ये आप एक थोड़ा सा देखिए, ये इनका एक्चुअली तरीके से ना कन्फेशन है। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. 1,50,000 half people were captured, more than 1,00,000 people were killed, and this filled me with sorrow। इसका मुझे बहुत दुख, और दुख के चक्कर में इन्होंने फिर बाद में क्या किया, चीजें चेंज की, राइट? लाइक दिस, people who are kind to their relatives and friends, to their slaves, servants, die or lose their loved ones। That's why I am sad and I have decided to observe Dhamma। अब से मैं धम्मा को ही फॉलो करूंगा, और आगे से फ्यूचर में we are only going to win through Dhamma, not through force। This is exactly what happened after this, right? तो प्राकृत वर्ड को हम धम्मा बोलते हैं और संस्कृत वर्ड क्या बन जाता है उसका? धर्म। That's why the word धर्म does not mean religion। धर्म मीन्स ड्यूटी। ठीक है, अब हिंदी में हमारा कोई वर्ड ही नहीं है जो रिलीजन को डिनोट कर सके, इसलिए हम यूज तो वर्ड धर्म ही करते हैं सर। बट धर्म का जो स्पेसिफिक मीनिंग है, इट यूज टू बी व्हाट इज योर ड्यूटी इन लाइफ रादर देन रिलीजन। रिलीजन इज अ वर्ड व्हिच इज अ बिट डिफरेंट, क्या फॉलो कर रहे हो आप, ड्यूटी इज अबाउट आपकी ड्यूटी क्या। ठीक है, so that's how the word dharma or the dhamma does not have an English translated word, है ही नहीं उसका उस तरीके से। ठीक है, then he gave message to his subjects also। जैसे कि मैंने आपको बताया, from the 6th century BC itself there was an intense competition। 62 63 हमारे heterodox sect आ गए थे, बहुत कंपटीशन था। इन्होंने बोला it is both wrong to praise one's own religion and or criticize another। Each one should respect the other's religion। If one praises one's own religion while criticizing another, one is actually doing great harm to one's own religion। So that's what he said। 2018 या 2019 में यूपीएससी ने यही पूछा था और बाद में प्रीलिम्स में लिख दिया कि ये वर्ड्स कौन से रूलर थे। 4 ऑप्शन कर दिया। For religious policies, we have two very famous personalities। In ancient India, we have Ashoka. In medieval, we have Akbar।
These are the two people which are very prominent with respect to their religious policies. Okay, so Ashok का जो एक level का personality है, that can be seen from his edicts, and how he is caring for his subject, how he is accepting his own mistake. Only a courageous person can accept a mistake. A weak person can never accept mistake in life, right? And then eventually he came out with this edicts, the major edicts, the minor edicts, the pillar edicts, and all these edicts are responsible for spreading his ideas. Okay, तो इसकी famous क्या है? Edict. जैसे ये बहुत famous है. This is the draw pillar edict of an elephant that we have at our Dholi, है ना? ये भी एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया. इसका कारण कि जब ऑप्शनल ठीक से पढ़ लोगे ना, तो प्रीलिम्स का चैलेंज वैसे ही कम हो जाता है लेवल का, because naturally क्वेश्चन और कहाँ से पूछे, वहीं से पूछे. Such kind of facts which can easily learn along with the optional. Okay. Then Arthashastra, as we have discussed, Arthashastra was written by Chanakya or Kautilya, right? And this is a prescriptive text. इस word को हमेशा ध्यान रखें. डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, ये दवाई ले लेना, लेते हो नहीं, छोड़ देते हो बीच में. So it was a prescriptive text, meaning it has written a state should be having 7 pillars, जिसको हम बोलते हैं सप्तंग राज्य थियरी. बट ये नहीं लिखा है कि स्पेसिफिकली ये होगा या फिर नहीं होगा. इट्स अ रिकमेंडेशन, इट्स अ प्रेस्क्रिप्शन, इट इज नॉट डिपिक्टिंग रियलिटी. It is not depicting reality. That's why it is very difficult to apply the book Arthashastra to Mauryan period. And probably the next time when NCERT are going to be written, ये शायद हटने भी वाली है as a Mauryan period. Because all the historians are now coming together and saying this does not belong to Mauryan period. Initially जल्दबाजी में अप्लाई तो कर दो, because कुछ keywords जो अर्थशास्त्र के अंदर है और अशोका के एडिक्ट्स में है वो सेम है, कुछ keywords, but largely जो है it does not reflect. So Arthashastra is the source. It used to be the source, but in the future it probably is going to be omitted from it. और ये डिबेट अभी हम ऑप्शन में पढ़ेंगे, जब हम क्लास करेंगे तो वहाँ पे ये डिबेट हम पढ़ेंगे क्यों हम इसको हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं हमारे पास, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हमने इकट्ठे कर लिए कि प्रोबेबली इट डज नॉट बिलोंग टू द मॉडर्न पीरियड, इवन दो एनसीईआरटी में हम यही चीज पढ़ते हैं. ठीक है. इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यस, किंग वाज द सुप्रीम वन. उनके नीचे एक काउंसिल हुआ करती थी. ठीक है. देयर यूज्ड टू बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको बोलते थे मंत्री परिषद. इट यूज्ड टू बी देयर, राइट. द कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र and this region was directly administered. Other than this, the rest of the empire, it was divided into how many provinces? 4 provinces were there. ठीक है. जैसे कि हम साउथ में देखें तो साउथ में जो था सुवर्ण नगरी, it was the area, right? वहां से कंट्रोल होता था. Ujjain was in the middle, Takshila was in the northwest, and Tosali, it was in the region of Odisha. ठीक है. उड़ीसा वाला जो रीजन था उसको तोसाली से कंट्रोल करते थे, राइट. So these were the provinces which were there. प्रोविंसेस जो थे उनको कौन गवर्न करता था? गवर्नर्स. दे यूज्ड टू बी देयर, राइट. रेवेन्यू कलेक्शन, दिस वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समहर्ता. देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेजरर आल्सो बाय द नेम ऑफ सनी. ठीक है ना. ये सारे यहाँ के इनके कुछ ऑफिशियल्स थे. टैक्स वाज कलेक्टेड इन अ वेरी रिजिड मैनर. बहुत बड़ा स्टाफ. इनफैक्ट मौर्यास को हम एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं. ब्यूरोक्रेटिक स्टेट मींस व्हिच इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. एंड व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, नेचुरली the tendency to centralize is always going to be there. जैसे हमारे historian है आर एस शर्मा से that it was a centralized state. Why is it called a centralized state? Because of this bureaucracy. 27 अध्यक्ष हुआ करते थे, and these adhyakshas, they used to control their whole economy. They used to control even some part of their army also, right? So what it tells us कि bureaucracy के ऊपर इनका बहुत बड़ा क्या था? रोल. ठीक है. पूरी की पूरी स्टेट थी. वहीं अगर हम बात करें बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट से नीचे लेवल की, विलेज लेवल की, यूज्ड टू बी स्थानिका, जो 5 से 10 विलेज के ऊपर एक तरीके से शासन किया करते थे. ठीक है. एंड विलेजेस देते हैं वो देवर सेमी ऑटोनोमस. ये आपका क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू धम्मा. धम्मा उन्होंने बता तो दिया कि भाई क्या चीजें हैं जो धम्मा का पार्ट. इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने 5-6 कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लिए, जैसे वो खुद धम्मा यात्रा किया करते. ठीक है. He appointed the officers also, जिनको बोलते Dhamma Mahamatras. These Dhamma Mahamatras used to travel every 5 years, right? And he also sent the message of Dhamma to other areas also, outside the Indian subcontinent. So all those things were done by him in order to spread the message of Dhamma, and it went far and wide. Decline की जब हम बात करें Mauryan Empire,
The last ruler, Vedar, he was killed by Pushyamitra Shunga. So Pushyamitra Shunga was the one who was able to kill him. उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट होती है. ठीक है. तो देखिए जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर वाज देयर broadly from 324 or 21 to around 187 or 184. The dates are a little bit exactly किसी को पता नहीं है, but आसपास की बात हुई. ठीक है. तो ये टाइम पीरियड था. So you can say roughly for around 150 years we had the Mauryan Empire. After the Mauryan Empire declined, we see the Post-Mauryan period. Post-Mauryan period is a bit complicated to understand. It's not that easy to understand. Reason being, there are so many empires which are going to be built after this. Okay, so I'm giving you a general formula for the sake of understanding. Okay, a general formula for the sake of understanding. तो तीन चार पार्ट में पूरे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ पोस्ट मौर्य. तो पोस्ट मौर्य में जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, ठीक है, दिस इज वेयर वी हैड इन्वेजन्स in the northwest region. Here the first one to come, they were Indo-Greeks. After Indo-Greeks, we see the entry of Sakas, okay, and then finally we see the entry of Kushanas. This is in the northwest, right? जब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र साइड की, we had the Shungas. They were the one who were able to go over the Mauryas, the Pushyamitra Shunga. After Shungas, we had Kanvas. After Shungas, we had Kanvas. Now, this is towards the north region. This is towards the region of north. बात अगर हम करें Deccan की, the Deccan we see the rise of Satavahanas. We see the rise of Satavahanas. In fact, the founder of Satavahana killed the last ruler of Kanvas. Okay? The founder of Satavahana was Simuka. And in the deep south, we had the Sangam age, and here we had three smaller states. Okay? Cholas, Cheras, and Pandyas. ये मैंने आपको इसलिए बताया, कई बार इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. The post-Mauryan period, कौन किसका contemporary? Because this was a state, a pan-India empire. Whenever a pan-India empire is going to fall, naturally large number of small dynasties are going to rise. These were the people who came from outside. Then this is a lineage which continued from the Shungas and then the Kanvas. The Kanvas were defeated by the Satavahanas. We were ruling in the Deccan, and finally in the south we have Cholas, Cheras, and Pandyas. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक स्केल है फॉर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में कभी बात करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक. इसको इतनी जल्दी हम बात नहीं करते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पार्ट को डिस्कस कर भी लेते हैं. तो प्लीज सी, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. What happened? There were few tribes in the Central Asian region who wanted to go on for the invasion. सबसे पहला टारगेट सेंट्रल एशिया से कौन सा निकलता है? चाइना. But China, the rulers, they started building this great wall to safeguard their region. But there was no such wall in the northwest part of Indian subcontinent. तो जब इन लोगों ने अपना डिफेंस कर लिया, the next area which was now going to become vulnerable, that was the Indian subcontinent. इसी वजह से इंडिया में किसकी एंट्री होती है? इंडो ग्रीक्स की एंट्री होती है. इंडो ग्रीक्स they were first trying to go towards China, but that did not happen because the Chinese were having the Great Wall. Right? सब ठीक तो चल रहा है? इन लोगों ने कल ऐसा डराया ना, है ना? Anyway, so Indo Greeks, they were the first one to enter. All right, these were the people who came to the region of Afghanistan, and finally, with the period of time, they also had to capture some of the regions of Persian Gulf as well as Red Sea. Okay, so Indo Greeks were the first one to enter this region. जब हम बात करते हैं Indo Greeks की, two good rulers are there, two prominent rulers are there. We have Demetrius first, Demetrius second. These are the two prominent rulers of these Indo Greeks. और बाद में एक और आते हैं by the name of King Menendra, right? And the famous text also we have with respect to that.
Anyway, we do not have many texts to understand about the Indo-Greece. Indo-Greece की जो maximum information है, it comes from where? It comes from the poems. They have mentioned their name, they have mentioned their portraits are there. You can see there, the portraits are there, dates are also there. So such kind of things are there which gives us information about these Indo-Greeks, right? The large number of such kings came. The word which was used in India for these Greeks was Yavana. Yavana was the word which was used for them. Please remember that. Okay, Yavana. In fact, the Greeks also fought with the Chungas because the Greeks were trying to enter in the Indian subcontinent, and by that time, who had come to power? Pushyamitra Shungas. There was some fighting among these two also. Alright. Later on, the Indo-Greeks will be defeated by the Shakas. But among them, there is one king which is always famous. That is the King Virendra. King Virendra is famous. Why? Because there is discourse which he is having with the saint Nagasena, right? So that's the discourse. This one was the Milind Panho, the questions of King Virendra. So that is what gives us information about him, a lot of information about him, and how Buddhism became famous even under these kings. Buddhism was already famous during the time of Mauryas, and now the tradition was carried forward by the Indo-Greeks. Why? Please try to understand. It was not easy to become the part of Indian society as per the Vedic culture. The Vedic culture में होता था Varna system. Varna system was linked to birth. अगर आपने birth ही नहीं लिया तो आपको वर्ण मिल ही नहीं सकता कुछ. So naturally, if you want to become part of Indian society, what was the easier method to enter? It was Buddhism. सीधा Buddhism अपनाना. वर्ण की जरूरत नहीं है, सीधा आप Indian society का part बन गए. That's why these outsiders, they were focusing upon giving patronage to Buddhism. The same is going to happen under the Shaka. The same is going to happen even under the Kushans. सब किसको patronage देंगे? Buddhism. सबसे ज़्यादा patronage इसी को जाएगी. ठीक है? तो किंग मिनेंद्र जो है वो उनके सबसे फेमस किंग है. ठीक है इनमें से. And he was the one who asked these questions to Nagasena. Okay, who was a teacher, and this is what is known as the Milind Panho. From the questions of King Virendra बोलते हैं. ठीक है. Rest will discuss later on. ठीक है. उनके बाद जो next dynasty आती है, that is the Sakas. Sakas are able to capture this region. Alright. The first ruler of the Sakas is having the name of Moga. We do have a place Moga in Punjab today, right? So Moga is the name of the first Saka ruler, and with the period of time they were able to appoint multiple satraps. तो इंडिया के अंदर जो एक मिलिट्री गवर्नर का सिस्टम था, this was made very strong by these Sakas, and they became very independent rulers with the period of time. ठीक है. The Sakas were important. Next are the Kushans. Kushans were the one who were the strongest among them. In fact, the first major ruler of this Kushan, इनकी 5 फैमिली की lineages थी Kushans की. All of them they were combined by Kujula Kadphises, and he became the founder of the Kushan dynasty. And with the period of time, large number of rulers are going to come after him. Bhima Kadphises is going to come, right? But for us, the most prominent ruler is Kanishka. ठीक है. जब हम इनका रूल्स देखते हैं तो they are able to capture this Hindu Kush also, they are able to capture this Northern Plain also. So that's why they were having very fertile area under their control, and this is the main reason why trade and commerce is going to rise in India during this time. There is a very famous debate which was started by the British historians. ये लोग क्या कहते हैं कि पोस्ट मौर्य जो एज है ये डार्क एज. कहते हैं पोस्ट मौर्य क्या है? डार्क एज है. क्यों? बिकॉज उनको लगा कि जब भी पॉलिटिकल डिक्लाइन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? डार्क एज बोल देंगे. भाई मौर्य एम्पायर था, इट एंडेड, और देखो आपने कितने सारे छोटे छोटे एम्पायर इंडिया में राइज करके, तो उन्होंने वर्ड यूज करना शुरू कर दिया डार्क एज. तो डार्क एज इज नॉट अ वर्ड विच कैन रिफ्लेक्ट द रियलिटी. व्हाई? बिकॉज जब भी हम डार्क एज वर्ड यूज करते हैं, इट शुड see everything in total. It should see the political life, social life, economic life, religious life, even art and architecture. अगर हम बात करें इकोनॉमी की, this was the time when Silk Route was under the control of Kushans, and when the Silk Route was under their control, naturally it was going to increase the trade of India, right?
तो ये वाला टाइम है जिसमें इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट लेवल ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स उसको मिंट किया गया. रीजन बीइंग वी वर प्रॉफिटिंग अ लॉट फ्रॉम दिस सिल्क रूट. देखिए सिल्क रूट का लॉजिक क्या था. सिल्क वाज मेड इन चाइना, राइट. इंडियन हम बस क्या करते थे वहां से बस लेते थे एंड वी यूज्ड टू पास इट ऑन. तो इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ द कमीशन. तो वहां से आएगा हम आगे भेजेंगे लेकिन बीच का कुछ प्रॉफिट किसके पास आएगा, इंडिया के पास. This was the Silk Route. Naturally, only silk was not transported from here. Large number of other commodities were also imported and exported. But since silk was the most costly and was in the highest demand in the region of Europe, so naturally it came to be known as the Silk Route. That's why the Kushan dynasty is very, very important for us. Reason being, under them, India became very rich because of the rise of trade and commerce. Kanishka was one of the most famous ruler among them. Okay, and why? Because he also was a follower of Buddhism. In fact, Buddhism के अंदर 4 famous councils हैं, and he was the one under whom we see the 4 councils. Okay, the councils they start from the time of the Ajatashatru. Then later on, Kal Ashok, the second council, third was under the control of whom? Ashoka himself, and the fourth was under the control of Kanishka. So these are the 4 Buddhist council. Yesterday, I think you were asking कि भाई पहले बुक लिखी जाती है या फिर पहले लीडर आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these Buddhist councils were very important because they were trying to identify the real idea of Buddha. And during this time, the 3 famous books, Tripitaka, they were written down. And later on, we do see some split also within the Buddhism. बुद्धिज्म के अंदर 2 मेजर स्कूल बनेंगे, एक महायान बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हिनयान बनेगा. हिनयान यूज्ड टू फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, and Buddha was not considered as a god in Hinayana. He was considered as a teacher, but in Mahayana he was considered as a god. Second, they also started the image worship, and in the Mahayana Buddhism you also see development of the concept of Bodhisattva. Bodhisattva are the compassionate people who delay their own enlightenment so that they can help others. ये concept भी इसी time पे famous होना start हो गया. So within Buddhism also we have large number of ideas. ऐसा नहीं कि completely consistent ideology है, ऐसा नहीं है. Okay? This is the famous Silk Route, right? So as we were discussing, first we have Maurya, the second we have is Post-Maurya. After this Post-Maurya, South India का topic हम सारा एक साथ कल discuss करेंगे, ठीक है? Next we see the entry of Guptas. Now Guptas are going to be a strong dynasty from 300 to 550 AD. This is the time period of Guptas. They were also having their contemporaries in the Deccan by the name of Vakatakas. Okay, Vakatakas. And this is the dynasty which is most important for us. Okay, this is the most important dynasty for us. क्योंकि इसकी कुछ बहुत सारी ऐसी achievements हैं which were happening for the first time. First thing, they are famous for the best coins which were formed, the gold coins. Okay, after the political disintegration which we witnessed during the Post-Mauryan period, again the consolidation started, and this time it was under the Guptas. So they also started political consolidation. Third, under them we see the beginning of temple architecture. So we see a revival of the Brahminical religion, and temple architecture क्या है, start होता है. The first style of temple architecture in India, it is known as Nagara. The Nagara style of temple architecture वो यहाँ से begin होता है. तो बहुत सारे रूलर्स आएंगे गुप्तास के, ठीक है. अगर हम बात करें गुप्तास की तो गुप्तास आर फेमस फॉर दैट पर्पस. सोर्सेस की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेस हैं. In fact, some of the ideas given in the Ramayana and Mahabharata, they also belong to the region of times of Guptas. Along with we have Kamandaka's Nitisa. Just like we often link Arthashastra with the Mauryan period, we link Kamandaka's Nitisa with the period of the Guptas. That's very important. And we also have Devi Chandraguptam and Mudra Rakshasa, and both were written by Vishakha Datta. Okay? So these are also providing information. We have Buddhist and Jaina sources also. The multiple works of Kalidas, they are also there.
And plus, we also have a traveler by the name of Fayan. Fayan also gives us information. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. देखो दो ट्रैवलर हैं जो फेमस हैं, फायन और दूसरे कौन से हैं, हुनसेन. दो लोग हैं ये, ठीक है, दो चाइनीज. इनफैक्ट थर्ड भी है इट सिंह, बट वो किसी के टाइम पीरियड में नहीं है. फायन केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास एंड हुनसेन केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. ठीक है, तो ये ब्रॉड इंफॉर्मेशन याद रखें. सेकंड, हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं गुप्तास के बारे में जानकारी के लिए. इसमें सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन को अगर हम बात करें वो कौन सी है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इट इज आल्सो नोन एज प्रशस्ति. प्रशस्ति मींस जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने लिखवाई थी, खुद हमारे समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी. इसको प्रशस्ति भी बोलते हैं. मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन आल्सो गिव्स अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त. फर्स्ट, इलाहाबाद, इट टॉक्स अबाउट होम, टॉक्स अबाउट समुद्रगुप्त. और कंपोज किसने की थी, हरी सेना ने इसको कंपोज किया था. ठीक है, अगर इस इंस्क्रिप्शन का हम 100% एक्सेप्टेंस कर ले तो भाई इन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया था. He was best in the music, he was best in warfare, he was best in statecraft. There was not a single activity in which Samudragupta was not best. इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रशस्ति. प्रशस्ति इसलिए बोलते हैं बिकॉज खुद से किसने लिखवाई है, खुद ही की. इसको वेरीफाई करना जरूरी है, अदरवाइज देयर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल नॉट बी करेक्ट. अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा है, तो ही टेल्स अस दैट ही वाज एबल टू डिफीट द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त. कि नॉर्थ के लोगों को हमने डिफीट कर दिया. ही वाज आल्सो एबल टू डिफीट द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ, एंड दैट्स हाउ ही मेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर. ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है प्रशस्ति के अंदर कि भाई ये सारा एरिया मैंने कंट्रोल कर लिया. साउथ में उन्होंने यही बताया कि भाई साउथ में मेरा इनडायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल. बट आर्यवर्त वाला जो रीजन है वाज द वन वेयर ही वाज हैविंग डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है, कोई कॉइन्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं. तीनों हमारे पास सोर्सेज हैं. वी हैव द लिटरेरी सोर्सेज आल्सो, एंड इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी हैव इंस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉइन्स. So we depend upon them to come out with the importance of this. Okay. वही हम बात करें इनके अर्ली रूलर्स की, तो जो इनकी इनिशियल रूलर्स थे, they were not very strong. The founders of the Gupta dynasty, the first founder was श्री गुप्ता. है ना, बहुत इजी नाम है, गुप्ता जी का नाम है, क्या लिखा है, श्री. तो श्री गुप्ता बन जाते हैं इनके फाउंडर. आफ्टर श्री कम्स द सेकंड पर्सन, पता नहीं किसने नाम लिखा था, घटोत्कच. ठीक है, तो घटोत्कच was there. Now, these are the early rulers. What's the meaning of early rulers? Probably they were under the control of someone else. It is often said that the rise of this Gupta dynasty initially started under the Kushans, and later on they defeated the Kushans and then they came to power. The first powerful ruler, he was Chandragupta first. यहाँ से कहानी सही तरीके से स्टार्ट होती है. क्यों? Because he was the first person to take this title, महाराजा विराज, कि राजाओं के भी राजा हैं. So from here we see strong kings coming one after the another. Okay, the Chandragupta first one comes, he rises to power, he has a very big legacy also captured, and then we have the Samudragupta. Okay, Samudragupta is also there. He is able to defeat the kings of both North as well as South India, and he is often given this title of Napoleon of India. What's the why Napoleon of India? Because Napoleon also fought many wars with the multiple powers of Europe. But that happened during the 18th and 19th century. क्यों इनको नेपोलियन बोलते हैं? Because this is from the perspective of a European writer. नहीं तो हमें नेपोलियन को बोलना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, है ना, वहाँ बोलना चाहिए. बट हिस्ट्री ऐसी यही दिक्कत है, हमारी इंग्लिश हिस्ट्री कौन लिख के चले गए, ब्रिटिश. एंड वट एवर दे हैव रिटन वी आर कंटिन्यूइंग इवन टिल टुडे. इसीलिए कभी कभार जब हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए वेस्ट की मेंटालिटी से, तो वो सच भी है. बिकॉज व्हाई शुड वी कॉल हिम नेपोलियन ऑफ, Why should we call him? Because naturally he came first. हजारों साल पहले आए थे, तब भी उनका नाम नेपोलियन दिया जा रहा है. ठीक है ना, that's how it is. So he was a very powerful ruler. The most prominent ruler is Chandragupta II, most important ruler with respect to the development of the Gupta Empire, because he was having the largest area under his control. Second, he was also famous for having these Navratnas, okay, 9 jewels. इनमें से एक खुद कौन थे, कालिदास. Kalidas was one of them, right? Kalidas was one of the most famous poet. We had Harisena as a scholar. We had Amar Simha. Okay, Amar Simha ने लिखा था अमर कोश. अमर कोश एक्चुअली एक डिक्शनरी है, ठीक है, इट्स अ लेक्सिकन. So it was written by Amar Simha. ये भी एक बार प्रीलिम्स में UPSC में पूछा था. And he also had the Dhanavantri, who was the physician. So he was having these, और भी इसके अलावा भी काफी लोग थे, but not required. Okay, plus this is a very typical story. He was having an elder brother.
He was having an elder brother by the name of Ramagupta. Ramagupta was getting defeated by his enemies, and Ramagupta became ready to accept defeat. But at this point of time, Chandragupta II, he became very angry over this. And naturally, क्या था कि Ramagupta became ready to even give up his wife to his eventual enemy. तो इन्होंने क्या किया, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था देवी. So what was done by Chandragupta II? He killed his own brother Ramagupta. Then he killed the enemy, and then he married Devi, and that's how the story becomes Devi Chandragupta. Okay, so he was trying to safeguard the honor of his family. That's why रामागुप्ता जो है ऐसे काम किए उन्होंने, उनको उनकी जेनेलॉजी में भी नहीं रखते कि ये हमारी लाइन में तो नहीं है. तो अगर आप जेनेलॉजी देखोगे गुप्तास की, उसके अंदर किसका नाम नहीं मिलने वाला? रामागुप्ता. लेकिन रामागुप्ता बहुत स्मार्ट थे, अपने पॉइंट्स लेके चले गए. हमें इनके बारे में इनके पॉइंट से पता चला, अदरवाइज नो इन्फॉर्मेशन वाज देयर. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम हिस्ट्री की चीजें पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा भाई सोर्सेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड रामागुप्ता की पूरी हिस्ट्री मिटा दी गई थी, बस उनके पॉइंट्स नहीं मिटाए. इफ इवन दोस थिंग्स कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ, तो हमें कभी रामागुप्ता हमें पता चलता ही नहीं. ठीक है, तो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है. देन वी हैव लेटर रूलर्स. इनके बाद में कुमारगुप्ता फर्स्ट. जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर है गुप्ता के, उनको हम क्या बोलते हैं? स्कंदगुप्त. ओके, ही इज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर and he also died by 467 AD. तो मोटा मोटा अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो वो भी 150 साल के लिए ही स्ट्रॉन्ग था, स्टार्टिंग फ्रॉम 319 ऑल द वे अप टू 467. बट इनके बाद भी इनके जो लेटर रूलर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं, और जो उनके लास्ट रूलर हैं बाय द नेम ऑफ विष्णुगुप्ता. ओके, ही रूल्ड फ्रॉम 540 टू 550 CE. So by 550 AD, for all practical purposes, the Gupta Empire was over. The Gupta Empire was over. कुछ छोटी मोटी डायनेस्टीज गुप्ता की कंटिन्यू रही, जैसे कि एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ मगध, उसको हम बोलते हैं गुप्ताज ऑफ मगध. बट दे कैनॉट बी कंपेयर्ड विद द ओवरऑल गुप्ताज, बिकॉज गुप्ता जो थे वो बहुत बड़ा एम्पायर. ये इनके सारे पॉलिटिकल रूलर्स हैं, जिनके बारे में थोड़ी सी आपको वो जानकारी दे दी. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दे टुक टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज. They used to take epithets like Param Devata. These kinds of titles were taken by them, right? The status of king was there, very strong. Then the provincial governors, they used to take the title of Kumaramatya. Kumaramatya was a title which used to be taken, right? And they were having high ranks. High ranks ही ये हमेशा दिया करते थे, ठीक है. कुमारमत्या जो थे ये रॉयल लोग थे और इनको भेजा जाता था to take care of the provinces. Then they used to have mantris or the council of ministers, and which used to be known as sabha. Dandanayaka, Mahajanapada, they were either judicial or military officers. Exactly नहीं पता कि judicial थे या फिर military, क्योंकि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही possible है, ठीक है. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो प्रोविंसेस हैं उनको हम क्या बोलते थे? देश बोलते थे या फिर भुक्ति. और जो जैसे मैंने आपको बताया कुमारमत्या जो गाते थे, वो बाद में कौन सा टाइटल लेते थे? उपारिका. जो गवर्नर था उसका जो टाइटल था वो था उपारिका. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट वाज कुमारमत्या जिनको क्या बनाया जाता था? उपारिका बनाया जाता था. देन वी फाइंड मल्टी सच काइंड्स ऑफ सॉफ्ट टाइटल्स इन दिस इंस्क्रिप्शन लाइक ईरान पीरियड इंस्क्रिप्शन. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी प्रोविंस हैं उसको डिवाइड कर देते थे डिस्ट्रिक्ट में. डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? विश्य. और उनको जो रूलर थे उनका नाम क्या बोलते थे? विश्यापति, ठीक है. तो विश्यापति बोलते हैं. और जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमें विथि, भूमि, पत्रिका, पेटा, छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट्स के अलग अलग नाम थे, अलग अलग जगह पे. सबसे छोटे लेवल पे हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल का रहा है? विलेज लेवल का, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन लाइक ग्रामिका. वो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है. बाद में डिक्लाइन होता है गुप्ता का. डिक्लाइन के भी वही 4-5-6 रीजंस हैं. एक इन्वेजन होती है जिसको हम बोलते हैं हुना इन्वेजन. अब ये ट्राइब था विच वाज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास. सेकंड, इकोनॉमी आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. इनकी जो ट्रेड थी विद द रोमन एम्पायर दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड दैट आल्सो बिकेम रिस्पांसिबल फॉर हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इन द कॉइन जो हमें मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमारगुप्ता. जो कुमारगुप्ता एज वेल एज सन स्कंद गुप्ता, दोनों के टाइम पे हमें हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटी देखने को मिलती है. देन वी आल्सो सी द राइज ऑफ मेनी लोकल रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर. तो ये सारे लोग मिलजुल के क्या करते हैं? दे आर रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट. Then after decline of this Gupta empire,
The Guptas, they broadly declined by 550 AD. And after that, we see rise of multiple dynasties in different parts of India. ठीक है, लेकिन हम गुजरात का बात करें तो from the region of Vallabi, we find the rise of Maitrika dynasty. ठीक है, Maitrika dynasty का rise करता है. If we see in the region of Haryana, the region of Thanesar. ठीक है, so here we see the rise of Pushyabhuti. पुष्यभूति एक्चुअली फाउंडर हैं, बाद में जो टाइटल ये लोग लेंगे वो वर्धन लेंगे बाद में. ठीक है, तो पुष्यभूति जो है इज द फाउंडर. ओके, अब इसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं या फिर वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं. इसी की डायनेस्टी जो है वो है हर्षवर्धन वाली. ठीक है, देन इन द रीजन ऑफ वेस्ट यूपी वी सी द राइज ऑफ फ्रॉम द रीजन ऑफ कन्नौज. यहाँ हमें देखने को मिलते हैं किनका राज, मौखरीज. ठीक है, here we see the rise of mockery. So in different parts of India, again different dynasties are going to rise. Alright. Like अगर हम बात करें Bengal, so in the region of Baroda, we had a famous ruler by the name of Shashanka. ऐसे कई हैं. ठीक है, अगर हम देखें असम रीजन, ठीक है, यहाँ पे हमें वर्मन डायनेस्टी देखने को. तो धीरे धीरे क्या होता है ना, देयर इज वन सिस्टम व्हिच बिकम्स डोमिनेंट इन द रीजन ऑफ Guptas. Okay, in the whole of India also in fact later on. System which is often known as feudal system. क्या बोलते हैं? Feudal system. Feudal system means that the central authority was now becoming weak, and all these areas, the small areas, they were becoming strong. तो एक feudalization बोलते हैं इसको या फिर feudalism बोलते हैं. ठीक है, ये इंडिया के अंदर भी आ जाता है, बट टू व्हाट एक्सटेंट ये एक बहुत बड़ी डिबेट है. बिकॉज feudalism का जो कंसेप्ट है वो यूरोप से स्टार्ट हुआ और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जब इंडिया की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया, at that point of time they came out with a system of feudalism even in India, but it generally means lack of central authority. Number two, majority of the power was now in the hand of the local feudal lords, and number three, decline of trade and commerce. ये तीन चार जो फीचर्स हैं, they are often linked with what is known as feudalism in India. देखिए, जब हम टाइमलाइन भी समझते हैं, ठीक है, जब हम टाइमलाइन भी समझते हैं तो वी ऑफन लिंक एंशिएंट इंडिया from the beginning of 2 million year ago up to 750 AD broad. This is known as ancient India. Then we say early medieval period. In this early medieval period, we'll see decline of central authority. We'll see large number of invasions by the Turks. Okay, and this phase is known as early medieval, 750 AD broadly to 1200 AD. This is for the sake of understanding. One year it will not work. Like some will say 1192. From there we see the second battle of the Rhine. But just for the sake of understanding. Then we see the beginning of medieval period. Medieval period is from 13th century to around 17th century. This is our medieval period. And then we see the modern period. Okay. The modern period of India from the 18th century till today. Okay. So ancient India, we see the beginning of political life, the life of social life based upon the Varna system, based upon the caste system. So multiple institutions were built. We saw the economic life, we see the development of religions. Okay. But
what we say India is the unity in diversity. जब small rulers इंडिया को रूल करते हैं, मैक्सिमम इंडिया में डाइवर्सिटी डेवलप है. In fact, the rise of multiple languages in India, it begins from early medieval period when there was no central authority. देखिए, every ruler they have to have their own religion. In those times, they will give patronage to one specific language. When you have a small level of area under your control, you will give patronage to your own language. You will give patronage to your own religion, whatever you follow. That's why maximum religious diversification also happened in India during the early medieval period. That's why early medieval period is now often considered as a distinct period from the ancient as well as the medieval. वो एक बहुत ही ट्रांजिशन वाला फेज 400-450 साल का, ठीक है, जिसको हम ये नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली कि भाई उसमें सारे फीचर्स एंशिएंट थे, सारे फीचर्स medieval थे. This is what is known as the model of periodization of history on the basis of socio-economic changes. If anybody asks you how should history be divided, it should be divided on the basis of socio-economic changes, on the basis of this. And when we divide on the basis of socio-economic changes, we come out with these 4 phases: ancient India, early medieval, medieval, and last would be modern. So even this topic जो अभी हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, more or less we are done with the topics we are required to cover. ये कौन से पीरियड में आता है? लगभग early medieval में. Because central authority was declined, and whenever central authority declined, it is often linked with the rise of diversity. But in the case of India, it is also linked with the rise of feudalism. Rise of feudalism. In fact, in India, the feudalism happened because of land grants. बहुत सारी डायनेस्टीज है, गुप्तास है, वकाटकास है, इन्होंने लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दी टू देयर मिलिट्री कमांडर. Now if somebody is going to have land under their control and they have taxation powers also, don't you think that they are going to always think that they are autonomous? Because in a way they are self-sufficient. So this started becoming prominent when weak Gupta rulers came to power. So starting from broadly 6th century BC, 6th century AD, you see the beginning of this large use of land grants. और बाद में यही कौन सा फेज क्रिएट करेगा? अर्ली medieval का. ठीक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे. On Monday we are going to discuss specifically about the history of South India. Because in the history of South India we see a little bit of different kinds of a transition. North India की तरह नहीं, वहाँ पे हमें मेगालिथ पढ़ना है, संगम एज के बारे में पढ़ना है, पल्लवास के बारे में पढ़ना है, चालुक्यास के बारे में पढ़ना है, and then you have to discuss a little bit about the Cholas. तो वो एक अलग पूरा का पूरा history. There's interaction between north and south also. It's not like that history of North India is completely different from the history of South India. There's few linkages also, okay, which we'll discuss. Like all of you should know that Harshvardhana, he was defeated by Pulkesin II, right? Now he was a ruler from the region of Chalukya, from the Deccan region. So चलिए एक बार जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? So with the decline of this Gupta, we see rise of Yashodharman of Malwa region. ठीक है, so in Malwa we see his rise. Mokris rise करते हैं in the region of Uttar Pradesh. Maitrikas rise करते हैं in the Saurashtra or in the region of Gujarat. ठीक है, तो ये सारे के सारे rise करते हैं. And one person who will be able to create a relatively good enough kingdom, that person is Harshvardhana. But Harshvardhana के सब contemporaries हैं, Maitrikas, Mokris, Vakatakas, the later ones, and even they themselves were from which dynasty? पुष्यभूति डायनेस्टी. ठीक है, हर्षवर्धन के राइज की भी देखो एक स्पेसिफिक स्टोरी, ठीक है ना. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, हिज elder brother, he came to power, Rajyavardhana. But Rajyavardhana, he was fighting with Devgupta of Malwa, and at that point of time there was also attack by Shashanka. So his brother got killed. Later on, even his brother-in-law, okay, the husband of his sister Rajyashri, was also killed by them. Then the whole thing starts. He was in fact a teenager at the time when he started beginning his rule. Initially, their dynasty used to control the region of Haryana from the region of Anisar. But his sister, she was married in the region of Kannauj or the Mokri dynasty. जैसे ही इनके brother-in-law की death हो जाती है, the boys, they were very small of his sister. At this point of time, he controlled the whole region. This is how we see the beginning of the life of
Harshvardhana. ठीक है, and with the period of time Harshvardhana is also going to capture multiple areas but largely to the region of North India. When he will trying to cross this Narmada river, this is where he will be defeated by the Chalukyas, Pulkesin second. ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में बाण भट्ट की फेमस बुक है हर्ष चरिता, ट्रैवलर्स है हमारे, है ना, उनकी बुक का नाम क्या है सीयूकी, जो फायान है उनकी बुक का नाम है फोक वोकी, इनकी बुक का नाम है सीयूकी। ठीक है, एपिग्राफिक मींस कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे हमारे पास मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनेपत है, बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये फेमस है बिकॉज इसमें हर्षवर्धन के ऑटोग्राफ है, जो खुद के साइन करके गए। कौन से इंस्क्रिप्शन में? बांसखेड़ा में। नालंदा की भी इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, एंड कुछ हमारे पास एहोल इंस्क्रिप्शन है विच टॉक्स अबाउट द मिलिट्री डिफीट ऑफ हर्षवर्धन। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, पुष्यभूति, he was the founder of this dynasty. His father was Prabhakar Vardhana, and after that, I have just told you the story that eventually his elder brother Rajyavardhan came to power. He, along with his brother-in-law, both of them, they were killed. And finally, he shifted capital from Thanesar to Kannauj. This is how Kannauj became the epicenter of the power. Later on, there is going to be a tripartite struggle over the region of Kannauj, और तीन powers आएंगे। ईस्ट से आएंगे पाला, वेस्ट से आएंगे प्रतिहारास, साउथ से कौन आएंगे? राष्ट्रकूट आ गए। ठीक है, तो व्हेन वी विल डिस्कस ऑन ट्यूसडे अबाउट अर्ली मिडिएवल पीरियड, तो वहां पे हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टोरी मैंने आपको सुना दी इनकी। ठीक है, नेचुरली ही वाज नॉट एबल टू डिफीट शशांका, शशांका के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ही हैड टेकन अ वाव कि भाई जब तक शशांका को मार नहीं दूंगा आई विल नॉट सेट। शशांका वाज नॉट डिफीटेड बाय हिम नेचुरली, दैट्स अ रियल थिंग। Pulkesin II defeated him when he was trying to cross the region of Narmada. Extent of his empire as we've just seen in the map. ठीक है, broadly इनका भी जो empire का structure है it was same like that of the Guptas. वही है, Buktis बोलते उनको बोलते थे provinces. Under the there used to be Visha, under that there used to be Pataka, और सबसे छोटे लेवल पे हमेशा क्या होते थे? Villages हुआ करते थे। ठीक है, ये इनका एक administrative structure है। During his time we see the entry of Hunsang also. Hunsang, now he was a follower of Buddhism. Both Fayan and Hunsang, they came to India with only one objective, that they wanted to get as much text with respect to Buddhism as possible. और उसको फिर ये वहां से यहाँ से लेके चाइना लेके जाना। इनफैक्ट इन्होंने हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके तुम सोच नहीं सकते। इंडिया में कोई मीट नहीं खाता, इंडिया में कोई किसी को मारता नहीं है ना, इंडिया में सब अच्छे लोग हैं। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट बुद्धिज्म इन चाइना। सीखो कुछ इंडिया वालों से, है ना। इस तरीके से इन दोनों चाइनीज ट्रैवलर ने हमारी बड़ाई की हुई, एक आइडियल सोसाइटी के बारे में इन्होंने बात की हुई, बट दिस वाज नॉट द रियलिटी एज ऑल ऑफ अस। ठीक है ना, देख बहुत फेमस स्टोरी है विच इज विद रिस्पेक्ट टू हुनसेन। हुनसेन को एक्चुअली कुछ रॉबरर्स ने पकड़ लिया था। ठीक है ना, अपनी बुक में लिखते हैं कि भाई आई वाज कॉट, उनको उल्टा लटका रखा था और नीचे आग लगा रखी थी। ठीक है ना, उल्टा लटका दिया, नीचे आग लगा रखी थी। एंड ही सेड at that point of time he was just doing meditation, जो इसको सिखाई गई थी कि जब भी कोई कष्ट आए तो क्या करना है, सबसे पहले मेडिटेशन। एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय बोलते हैं, द फ्यूचर बुद्धा इज नोन एज मैत्रेय। तो फिर उनको थोड़ी सी दया आ गई, छोड़ दिया। ठीक है, बट एनीवे stories are given etc etc, not very much important from exam point of view, but as stories। एक बहुत फेमस चीज ये भी है कि हर्षवर्धन इनिशियली ही वाज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म, लेटर ऑन उन्होंने किसको अपनाया? बुद्धिज्म को अपनाया। बाद में ये काफी सारी प्रयाग में जाके रीजन ऑफ इलाहाबाद, ही यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ असेंबली, व्हाटएवर ही यूज्ड टू अर्न इन द लास्ट 5 इयर्स वहां जाके वो उसको डोनेट कर दे। बट अब ये बहुत ही मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट करना, भाई पूरी स्टेट के रिसोर्सेज थोड़ा ना डोनेट कर दे। प्रोबेबली व्हाटएवर यूज्ड टू बी हिज ओन कॉस्टली पोजेशन, उसको वो डोनेट कर दे। ठीक है, बट he was not able to get rid Indian society of the evils of sati। evils जो सती का स्टार्ट कहाँ से होता है? गुप्ता पीरियड में पहली बार हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, ईरान इंस्क्रिप्शन, एंड दिस कंटिन्यूज आफ्टर दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसीलिए जब मॉडर्न इंडिया में हम रिफॉर्म्स की बातें करेंगे तो वहां पे इसलिए स्वामी दयानंद कहते हैं गो बैक टू वेदास, बिकॉज वेदास टाइम पे कोई भी सती प्रथा नहीं थी, वो स्टार्ट ही गुप्ता पीरियड के आसपास हुई, and later on it became very complicated, and naturally this sati tradition was more among the rich class than the poor class। reason being, देखो सती एक तरीका ऐसे भी था कि एक लीनियज में से हटा दो ताकि उसको प्रॉपर्टी ना जाए, तो इसका एंगल सिर्फ सती से लिंक नहीं, इट वाज आल्सो हैविंग इकोनॉमिक
डायमेंशन एक होता है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। On Monday we will meet. On Monday our focus is going to be on the history of South India, जहाँ पे हम 4-5 चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द आयरन एज। जैसे हमारी यहाँ आयरन एज कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई थी। वहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी, मेगालिथ। तो मेगालिथ का बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट संगम। बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिनको हम बोलते हैं काला भरात, ऐसे बहुत लोग उनके बारे में जानते नहीं है, इतना पढ़ाया भी नहीं जाता, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द पल्लवास एंड देन विल डिस्कस अबाउट द चोलास। पल्लवास और चालुक्य से कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ेंगे, उनके बीच में क्यों लड़ाई होती थी बार बार, किस तरीके से। एंड लेटर ऑन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द अर्ली मिडिएवल एंड मिडिएवल। वो हम कवर करेंगे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बाय वेडनेसडे आवर ओवरव्यू ऑफ दीज क्लासेस इज गोइंग टू बी ब्रॉडली फिनिश्ड, ठीक है। फिर हम बाद में पेपर 2 करेंगे, वो हम अपना करेंगे आफ्टर द प्रीलिम्स। जब आपको पता ही है, आप लोग तो नहीं दे रहे हो, but there is a prelims which is coming for this year students on 25th of May। आज उसी के लिए एक्चुअली सेशन भी है ना। आफ्टर 5 मिनट्स आई हैव टू गो देयर, एक कहानी खत्म करके दूसरी कहानी स्टार्ट करूँ। तो ठीक है, आज यहीं पे फिनिश करें। आई होप समझ में आई बेसिक बेसिक चीजें। देखो एग्जाम के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ऑप्शनल के हिसाब से समझो। ऑप्शनल में क्या होता है कि यूपीएससी आपकी एक्सपर्टीज चेक करेगी इस ऑप्शन में। तो एक्सपर्टीज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जीएस की तरह तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन बना के देंगे आपको प्रीलिम्स वाले, वैसा कुछ आने वाला है। हमेशा आपसे उन चीजों के ऊपर पूछेगा जो कि हिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट, जैसे फोर्सेस से हमेशा एक क्वेश्चन, सिमिलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन हमेशा देंगे आपको। सेम गोज फॉर द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से भी हमेशा एक क्वेश्चन। बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म या जैनिज्म से टॉपिक, एक मौर्य से पूछे थे और एक गुप्ता। भाई आपको टोटल सिर्फ 9 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको 9 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए के अंदर, मैप तो करना ही करना है, दैट इज 100% यू हैव टू डू इट। फ्रॉम द रेस्ट यू हैव टू मिनिमम डू 1, मैक्सिमम यू कैन डू 2। तो यार इतना ही करके आपका अच्छा खासा एंशिएंट इंडिया फिनिश हो जाता है। बट हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी। जैसे अब मैंने बात तो कर दी महाजनपदा, अर्बनाइजेशन, लेकिन इसके अंदर डेप्थ में घुसना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? Similarly, we have to understand in detail what is the connection between Upanishad and Buddhism. सिर्फ हवा हवा में नहीं, ये स्टोरी काम की नहीं है ऑप्शनल में कि भाई 29 ईयर्स में वो चले गए थे, मैं 25 साल का मैं भी चला जाऊंगा अगर नहीं। ये स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। इंपॉर्टेंट ये है व्हाट वर द आइडियाज ऑफ उपनिषद, आई सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल, आत्मा और ब्रह्मा से क्या बात करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माया, माया इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उपनिषद। आप लोग भी मतलब कॉलेज में मोह माया तो करते होंगे ना, सब मोह माया है, सब छोड़ दो ये सब चीजें। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ माया, है ना। श्राद्ध के टाइम पे वर्ड सुना होगा पितृलोक, तो पितृलोक का कंसेप्ट भी उपनिषद के अंदर दिया हुआ है कि 3 लोक होते हैं, एक हमारा लोक, एक पितृ का लोक और एक भगवान का लोक, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्ट मुझे आपको समझाने हैं। नेचुरली मैं आपको एडवाइस करूँ घर पे जाके नहीं बातें, because these things are like more like technical। अब हमें नहीं पता कितने रियलिटी, बट इन चीजों को फिर कनेक्ट करना सीखना है कि भाई these are the ideas of Buddhism, these are the ideas of Buddhism। जैसे दोनों बात करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, बट उपनिषद में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, लेकिन बुद्धिज्म में सोल का कंसेप्ट ही नहीं, बिकॉज दे थिंक एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। वहां पे कहते हैं देयर इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ कैरेक्टर पर्सनालिटी, बट वो ये नहीं है। ये सब क्या ना, हमें स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी पड़ता है इन जॉब में। तो वहां पे अगर आपको ये सब फैक्ट्स नहीं मिलते ना, किसके फादर कौन थे, किसके मदर कौन थे, कौन कहाँ से गया, कोई फर्क नहीं। दिस इज मोर प्रोमिनेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये बुक किसने लिखी, वो बुक किसने लिखी, अरे ये सब थोड़ा ऑप्शन, ऑप्शन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक पार्ट कि आपसे मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा कि वाज इट सेंट्रलाइज्ड, फिर आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कम से कम हम वर्ड यूज करते हैं, ऑल ऑफ अस वी यूज द वर्ड सेंट्रलाइज, बट अगर कोई पूछ दे प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज, सडनली कहोगे पता नहीं, बस सेंट्रलाइज तो लग रहा है। फिर लगना वाला जो एक कंसेप्ट होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी देयर। तो सेंट्रलाइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर शुड बी देयर, स्ट्रॉन्ग आर्मी शुड बी देयर, राइट। व्हाट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द टाइम्स। देखो आज जिस लेवल का सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, इस लेवल का सेंट्रलाइजेशन उस टाइम पे पॉसिबल था नहीं। अरे भाई पाटलिपुत्र से तांगा लेके निकलते आप, जब तक कर्नाटका पहुंचते तब तक पता नहीं कितने महीने जा चुके होते।
ठीक है ना। आज क्या होता है 2 घंटे में पहुंच सकते हो, 3 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हो बड़े आसानी से। उस टाइम पॉसिबल था क्या? नहीं पॉसिबल था। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई whenever you use the word you should know कि for centralization you need very strong communication network, you need a very strong level of bureaucracy। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ती है क्लासेस के अंदर। इसीलिए जो हम ब्रॉडली 3 क्लासेस के अंदर एक ओवरव्यू कर रहे हैं, to finish this we need around 30 classes and we will take care of the map portion also, because map is the easiest part if you know, it's the most difficult part if अगर आपको ठीक से पढ़ा है तो खुद से करना नेक्स्ट to इम्पॉसिबल है मैथ के पोर्शन। ठीक है ना। मैथ का पोर्शन इतना टीडियस है ना कि भाई आपको बैठ के सारी लाइनें सीखनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉक्सेज हम बाद में सिखाऊंगा, जैसे ग्रिड पैटर्न विच वी फॉलो। इंडिया को डिवाइड करेंगे इंटू 30 पार्ट्स एंड फिर वहाँ पे हम पॉइंटिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर से फिर आप सीखोगे कि हाँ इस बॉक्स के अंदर ये 4 साइड आती है, इस बॉक्स के अंदर ये 4 साइड आती है। तो बाद में आपको सिखाऊंगा इस प्रोसेस के। ठीक है। रेस्ट वी विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम पे, सेम टाइम 3 बजे मिलेंगे। कंटिन्यू करेंगे द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्लासेस में है उसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ऑफ मिडिएवल इंडिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यस। एक क्वेश्चन एक्चुअली ऑनलाइन भी बच्चे ने पूछा हुआ है कि मुगल का पीरियड हट जाएगा क्या एनसीईआरटी वगैरह से? देखो वट एवर मे बी द पॉलिटिकल डिस्पेंशन, हर किसी का अपना एक इंक्लिनेशन होता है, बट वो सब ना देखो न्यूज़पेपर की बातें हैं, वो बातें आपके सिलेबस से नहीं है। कि मेरे से पहले भी एक दो बच्चों ने पूछा सर आपने मुगल्स पढ़ाया था पहले, बट अब तो हटने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो सिलेबस में जो है वो तो फॉलो हम करेंगे। ठीक है। जहाँ तक बात है आपके क्वेश्चन की, देखो केव्स क्यों बनी वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे घाट रीजन सबसे ज्यादा है। घाट रीजन समझते हो, पहाड़ी एरिया है उस एरिया के अंदर, तो केव्स वहीं बनेगी जहाँ पे पहाड़ है। दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट। नंबर 2, वो ट्रेड रूट्स के अलोंग है। जो केव्स बनती थी वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनती थी। केव्स के 2 पार्ट होते हैं, चैत्या और विहारा। चैत्या जो है वो पूजा के लिए होता है, विहारा रहने के लिए, रेजिडेंस। एक किसी भी, जैसे मान लो अजंता भी है, उसके अंदर तुम्हें चैत्या मिलेंगी बहुत कम, 4-5, विहारा मिलेंगी बहुत ज्यादा। तो वो उस टाइम के होटल भी हुआ करते थे। ट्रेड रूट्स के साथ में बनती थी ना केव्स, ताकि जो भी ट्रैवलर्स, देखिए पूरे का पूरा जो चंदा, पैसा किसने दिया ये केव्स बनाने के लिए? मैक्सिमम पैसा स्टेट ने नहीं दिया, ट्रैवलर्स ने दिया, श्रद्धालुओं ने दिया, जो खुद ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। तो इसलिए वो भी उसका पर्पस हुआ करता था। सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो केव्स उन्हीं अलॉन्ग में बनी है, और महाराष्ट्र के वेस्टर्न एरिया में आपको पता है सह्याद्री वगैरह रीजन है, तो वहां पे केव्स बनने की पॉसिबिलिटी है। और कहाँ बनेगी? अब अगर मान लो बना देते हिमालय पे, ऊपर चढ़ेगा कौन? वो उतना ऊपर चढ़ने के लिए शिव जी बनना पड़ेगा ना, कैलाश पर्वत के लिए। बेचारा नॉर्मल मोम क्या करेगा जो अभी उस लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए ज्यादातर केव्स वहीं बनती है जहाँ पे घाट रीजन मिलेगा आपको, पहाड़ी रीजन मिलेगा। इसलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द बेस्ट प्लेस। बहुत ऊपर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, और एक तपस्या करने के लिए थोड़ा सा सक्लूडेड एरिया भी चाहिए। नहीं तो वो जैसे वो आपने देखा ना कि तपस्या कर रहे थे, फिर इधर से लोग गाना गाते हुए आ गए। सारी तपस्या भंग कर दी, फिर वो श्राप देने में बिजी हो गई। तो उन सब से ऊपर भी तो उठना पड़ेगा। So that's why cave was an area which could help you in getting into this religious journey at the same time. It is keeping you away from the normal life. अब वहां जाके ये सब नहीं हो सकता ना, प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती। देयर शुड बी अ सेपरेट डिस्टेंस बिटवीन द वेयर द कम्युनिटी इज लिविंग एंड वेयर द पीपल आर लिविंग। ये तीसरा पर्पस ये आप मान लीजिए कि रिलीजियस जो डायरेक्शन चाहिए वो ऐसे एरिया में, जैसे आप भी कभी जाओगे ना हिल एरिया में, कभी भी जाओगे तो वहां जाके ना ऑटोमेटिकली दिमाग ना ऑफ हो जाता है, अच्छा फील होता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है आप कहीं जा तो सकते नहीं, एक ही रोड है ना। प्लेन्स में हम हमेशा सबसे ज्यादा इम्पल्सिव रहते हैं। प्लेन्स में हम सबसे ज्यादा इम्पल्सिव रहते हैं क्योंकि सारे रिसोर्सेज आसपास में, एवरीथिंग इज, वहां पहुंचो आराम से शांति। तो पहाड़ वाला रीजन ऑटोमेटिकली इट मेक्स यू मोर लाइक पेशेंट इन लाइफ, इसलिए भी उसको शायद चूज किया जाता होगा। और प्लस देखो और भी बहुत सारी चीजें थी सन की डायरेक्शन में, जैसे कुंभ है, इस बार जो कुंभ था तो वो भी देखा जाता है कि भाई किस किस डायरेक्शन में क्या बनाना है, because these things also matter for probably the energy. I do not understand it, but
पीपल हु डू दिस दे टेल दस कि भाई स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर चीज बनानी पड़ती है। जैसे इवन व्हेन गॉड्स दे आर टेकन इनटू डेथ, जिसको बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा था, क्या टाइम पीरियड है, क्या डायरेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉर्मली जो मंदिर होता है वो ईस्ट की तरफ बनता है। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडिया के मैक्सिमम टेम्पल नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बनते हैं, बट कुछ कुछ टेम्पल जो वेस्ट की तरफ भी बनते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज अलग थे। ये हर चीज का मिक्सचर करके ये सारी चीजें निकलती। ठीक है, तो चले आज फिर बाकी